from our team, we have Manish, we have Venkat, we have Shubham, we have Nilesh. So basically, Venkat and Manish are more specialized in technical, and Shubham is more in fundamentals. Myself, I also more specialized in fundamentals. So overall, we will discuss on the few topics. Like we have planned our session in two parts. Can you so we have marked our session in two parts. First of all, we will discuss some general topics like lots of questions are coming on the common topics, and later on we will take Q&As. In the middle of the session, if someone wants that there is any doubt, they can ask because we want to make the session interactive. So let's start. Okay. So we're starting with the basic question like how to set stop loss. So this question is related to the technical. So can Manish take and explain how can we set a stop loss so that we can minimize our losses? First of all, let's get into the basics like how to choose stocks, like the small caps, mid caps, and the large caps. Because just going to the directly to the technicals, it not be fair enough. First of all, let's take the recent scenario that when the recent market fall of the small caps and the mid caps, then if the main concern was the maximum people had the portfolio of the mid caps and they were the most impacted. Like in just a Nifty correction of around 1 to 2 point, like sorry, 10 to 20 points, their portfolio was around down by 1 point or 1.5%. So regarding this, I think Shubham Bhaiya has more efficient knowledge in that to how to rechannel the portfolio and just give a balance to it that we should have this large caps, small caps, and the mid caps all in the portfolio. So if you can continue. Yeah, see, the portfolio should be a mixed bag of small cap, mid cap, and large cap, all the caps. Okay, and not more than 30 or 40% it should consist of small cap. Last 10-15 दिन में we have observed that small cap has fallen to a great extent compared to Nifty. तो उससे पहले in 1 month they have given a good return also. So if we talk about stop loss, जो प्रतीक ने कहा था, so for small cap we can have a stop loss of 20 to 30% maximum. And one should also segregate the small cap, mid cap, and large cap on the basis of the market cap of the company. Like suppose the company which is having market cap till 10,000, we can consider it as a small cap, and the company having market cap from 10,000 to 40,000 approx, you can consider it as a mid cap, and above 40,000, you can consider it as a large cap also. So in small cap, first of all, to equity का आपका portfolio है, total equity portfolio, if you have a 1 lakh rupees equity portfolio, तो not more than 30 to 40,000 rupees should be invested in small cap. First and foremost thing, ये आपको ध्यान रखना है. So what will happen कि the impact of the percentage impact in your portfolio would be comparatively less. Suppose small cap में fall आ रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में 100% इम्पैक्ट नहीं आएगा. अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के क्लाइंट बेसिस में क्या हो रहा है कि स्मॉल कैप में अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स इफ इट्स फॉलिंग विथ 1% ऑनली ना, तो हम लोग के क्लाइंट बेस के पोर्टफोलियो में 1% या 1.5% का इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज मैक्सिमम वो लोग का पोजीशन है स्मॉल कैप में. सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा कि हम लोग को 30-40% से बेसी नहीं रखना है. दूसरा फिर हम लोग को जो रखा है, अब इसमें भी देखिए इट कैन हैपन कि फ्यू स्मॉल कैप्स आर परफॉर्मिंग गुड एंड हम लोग का फ्यू स्मॉल कैप का सिलेक्शन खराब हो गया. इवन प्रूवेदू कैन सिलेक्ट रॉन्ग स्टॉक, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि यू विल 110% बी अ श्योर शॉर्ट कॉल. तो उसके बाद भी आपको ऑन अ पर्सनल लेवल यू नीड टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस. तो आप जैसे एज पर योर रिस्क एपेटाइट यू मेंटेन दिस स्टॉप लॉस, बट हैव अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस दैट कि भैया 20% और 30% से ज्यादा मैं बियर नहीं करूंगा लॉस. And then after 20-30%, even if you think that now company is good and I should bear the loss, then you should consult Suvel ki Bhaiya or Shubham or Pratik and anyone ki we should bear the loss or we should exit. Then we will help you out. And उसी हिसाब से mid cap and large cap में भी stop loss रहना चाहिए. तब जैसे large cap में you can have a stop loss of 10%. That will be sufficient because Nifty stocks में rather than COVID situation in last year इतना ज्यादा fall आता नहीं है, तो इतना fluctuation आपको नहीं मिलेगा. And in mid cap you can have a stop loss of 15% approx. So I think stop loss and the portfolio segregation is being cleared. और आप लोगों का कोई क्वेश्चन या डाउट्स है, then you can put up. Yeah, if you want any topic या फिर ऐसा कोई. So what we concluded in stop loss is we have to first divide, segregate it into market cap in small cap, mid cap, and large cap. For large cap, we will keep it as 10%, and for mid cap, we will keep it as 15%, and for small cap, we will keep it as 20 to max 30%. And talking about the allocation, we should not allocate if we have a fund of 1 lakh rupees. Let's suppose we should not allocate 30 to 40% of our fund in small cap.
because we ultimately want to diversify our risk, and by doing this, based on the risk appetite, like if a person is highly risk adverse, so he can keep it as 40%, or if he want less risk, he can keep 30% in small cap. So going to the next question. Now we are discussing about the equity. If we talk about the overall investment, our overall investment, so how can we diversify it into more like in sovereign gold bonds or mutual funds and debt fund? So Shubham, can you elaborate it? Yeah. In Tuvedu also and in our groups also, I have seen that we are only talking about equity, but ये एक only option अवेलेबल नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, इन लिक्विड फंड ऑल्सो मीन इन लिक्विडिटी, जैसे आप जमीन के इन्वेस्टमेंट को लेट्स कीप अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम देन ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स. जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, मेनी पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट अब क्या है, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा क्लमजी है. मीन्स यू नीड टू होल्ड दी फिजिकल स्टॉक, फिर आपका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाता है. सपोज इफ रेट ऑफ गोल्ड इज 50,000 पर 10 ग्राम, then it costs about 51,000 or 52,000 because making charges ले लेते हैं. Even if you go for biscuits और एनी अदर फॉर्म, दैट 10 ग्राम का बिस्किट या कॉइन या कुछ भी लेना, तो उसमें मेकिंग चार्जेस का कॉस्ट आ जाता है, एंड फिर एक मिनिमम अमाउंट वाला चीज हो जाता है. सो इफ यू वांट टू गेट अपार्ट फ्रॉम दैट, देन यू कैन गो फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आरबीआई. ओके, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द इंटरेस्ट रेट, मीन 2.5% आपको सालाना इंटरेस्ट भी देती है. एंड फिर गोल्ड रेट जो लंदन एक्सचेंज के हिसाब से रेट निकलता है, दे पे आउट एज पर दैट रेट टू यू. बट अब समवन कैन से कि भैया हम लोग को इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 5 to 8 years करना चाहिए, बिकॉज तभी बेनिफिशियल होगा. अदरवाइज क्या होता है, मार्केट में वो आपका इसमें डिस्काउंट में ट्रेड होती है. तो इफ यू डोंट वांट दैट, देन यू कैन गो फॉर गोल्ड ईटीएफ ऑल्सो. निपॉन म्यूचुअल फंड सुना होगा आप लोग ने सबने, उसका म्यूचुअल फंड है, उसका सॉरी ईटीएफ है उसका. तो गोल्ड ईटीएफ है, तो प्राइस डिपेंड्स ऑन दी गोल्ड प्राइस इन द मार्केट, उसमें जा सकते हो. देन बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड्स है. Every mutual fund company has a debt mutual fund. Okay, so generally depends on the different these instruments. They have government debt funds, they have these floating debt funds, then PSU bank debt funds, फिर और भी जैसे दूसरे कंपनी के बॉन्ड्स जो या डिवेंचर्स इशू होते हैं उसके डेट फंड्स होते हैं. तो अपने रिस्क के प्राइस से यू हैव डिफरेंट डेट फंड्स आल्सो, और विदाउट रिस्क वाले डेट फंड्स भी बहुत मिल जाएंगे, विच कैन गिव यू अ बेटर रिटर्न देन एफडी, एंड आपका रिस्क कैपिटल बहुत कम रहेगा. एंड एफडी में लिक्विडिटी का क्राइटेरिया रहता है, डेट बॉन्ड में लिक्विडिटी लाइक एनी डे यू कैन जस्ट कीप फॉर मनी फॉर 1 week and after 1 week you can take it out. So I have one question, like should we invest little amount in FD or we should leave FD altogether in our overall investment? अब ये प्रतीक, दिस डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट. अब सपोज को किसी को क्या होता है, एफडी से बहुत कंफर्ट है कि भैया मेरे को एफडी चाहिए, तो तब एफडी में चल रहा. अगर अदरवाइज माय पर्सनल ओपिनियन, वी शुड लीव एफडी. अब मैं थोड़ा टैक्स पर्सपेक्टिव से भी आपको समझाता हूँ. एफडी में क्या है, एफडी में आपके ईयरली इंटरेस्ट में भी टीडीएस है एंड इनकम टैक्स भी है. एंड उसमें क्या होता है, एफडी में बैंक का कमीशन मोटा रहता है. बैंक वाले भी आपका फंड लेके या तो लोन देते हैं या दे गो फॉर मार्केट इंस्ट्रूमेंट. और आप डायरेक्ट डेट म्यूचुअल फंड में जब जाते हो तो उससे क्या होता है, ठीक है एएमसी का चार्जेस है थोड़ा बहुत आपका म्यूचुअल फंड कंपनी का, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वो लोग डायरेक्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. तो उसमें आपका क्या होता है, अर्निंग थोड़ा बढ़ जाता है. जैसे एफडी का रेट 5.5-6% है, तो म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में भी आपको 7.5% मिल जाएगा. उसके बाद और क्या बेनिफिट हो जाता है, सपोज करो यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 3 years. तो अब ना एवरी ईयर सपोज यू आर इन फॉलिंग इन 30% ब्रैकेट, तो क्या होगा, यू आर गेटिंग 6% रिटर्न इन एफडी. सपोज यू आर गेटिंग 6 लाख रुपीज इंटरेस्ट, तो उसमें आपका 1,80,000 रुपीज इट विल गो एज अ टैक्स, और आपका जो नेट बचेगा 4,20,000 वो बचेगा. लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है, वो कंपाउंड होता है, उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है. टैक्स है रिडेम्पशन. 3 साल के बाद इफ यू आर रिडीमिंग, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट है, तो उसके कारण आपका टैक्स बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका रिटर्न में कंपेयर टू एफडी इन डेट म्यूचुअल फंड. और सिक्योरिटी का जो बात है कि मतलब कि सेफ है कि नहीं डेट म्यूचुअल फंड, तो आप गवर्नमेंट डेट फंड में या पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट डेट फंड में या बैंकिंग डेट फंड में जाएंगे, तो दे इज नेक्स्ट टू जीरो रिस्क. वैसे तो बैंक भी फेल कर सकता है, कि फेल किया ही था आपका 1-2 बैंक, यस बैंक भी फेल किया था, एंड क्या था ना, महाराष्ट्र का एक जो बैंक था पीएमसी अकाउंट था, वो फेल किया था. बट इस नेक्स्ट टू जीरो रिस्क कौन, तो डेट फंड इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. उसी हिसाब से गोल्ड में, अब लोग बोलेंगे कि गोल्ड, अगर गोल्ड में अगर 5-4 साल में इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टर्म करना है, तो यू शुड गो फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. उसमें क्या होता है, आपको गोल्ड का जो रेट है, एग्जैक्ट रेट वो तो देती है गवर्नमेंट, एंड एवरी ईयर 2.5% इंटरेस्ट देती है, जो मोटा मोटी सेविंग्स अकाउंट का रेट हो गया. लेकिन अब किसी को है कि नहीं भैया मेरे को साल भर 2 साल के बाद पैसा लग सकता है, मेरे को गोल्ड में भी करना है, साल 2 साल में पैसा निकालना भी पड़ सकता है, देन यू शुड गो फॉर गोल्ड ईटीएफ. अब एक और है इक्विटी में, जैसे बहुत लोगों को इक्विटी में मेरे को एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, लेकिन भाई मेरे को
मेरे पास पोर्टफोलियो रिव्यू करने का टाइम नहीं है या गेटिंग दैट रिव्यू बाय टूएडू का टाइम नहीं है या वैसा कुछ है, देन यू गो फॉर गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो वहां पे फंड मैनेजर क्या करते हैं आपके कि दे रीअलोकेट योर फंड ऑन अ क्वार्टरली और मंथली बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस देख के। तो मतलब ऐसा है कि आपको एक जगह पैसा कभी नहीं रखना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप देख लो, देखो सबसे ज्यादा रिस्की है इक्विटी, आप समझ लो, देन इज इक्विटी म्यूचुअल फंड, देन यू कैन से इन आवर एग्जांपल केसेस डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड, हाँ देन हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट फंड एंड इक्विटी फंड। ठीक है, आपको सबको पता ही होगा, लेकिन मतलब अब हाइब्रिड में भी दो तरह का होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड कंजर्वेटिव। थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ मैं। एग्रेसिव में 65% आपका इक्विटी में रहता है, 35 डेट में रहता है। और अब देखिए इसमें भी टैक्स प्लानिंग भी होती है। अब सपोज करो you have a capital of 10 lakh rupees and you want to invest in a debt mutual fund 3 to 4 lakh rupees and you want to invest in equity mutual fund 6 to 7 lakh rupees। तो आपको 6-7 लाख रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल के या 3-4 लाख रुपया डेट फंड में डाल के, उससे ज्यादा अच्छा बेनिफिट है आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डालो। उसमें बेनिफिट क्या मिलता है, हाइब्रिड इक्विटी फंड का बेनिफिट एंड नॉर्मल इक्विटी फंड का बेनिफिट टैक्स पर्सपेक्टिव से सेम है, और डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा टैक्स ज्यादा है। तो आप हाइब्रिड में डाल दोगे तो आपका सारा पैसा, आपको बेनिफिट मिलेगा 35% डेट का एंड 65% इक्विटी का, लेकिन आपका क्या होगा, आपका सारा पैसा एज इक्विटी म्यूचुअल फंड ट्रीट हो जाएगा एंड टैक्स बहुत कम हो जाएगा उसमें। तो वो भी एक ऑप्शन है हाइब्रिड इक्विटी फंड। और तो सारे एएमसी के अच्छे अच्छे हाइब्रिड फंड है, you can go for that also. Then you can take a debt mutual fund. Then you can think sovereign. Then you can see gold ETF. Then you can before gold ETF you can say FD. Then gold ETF. Then sovereign gold bond. ये मैं आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब जो पैसा डूबने का चांस है सबसे ज्यादा है इक्विटी में। इक्विटी में भी सबसे ज्यादा है स्मॉल कैप में, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद लार्ज कैप में, और उसके बाद है इक्विटी म्यूचुअल फंड, देन हाइब्रिड फंड, एंड देन यू कैन गो फॉर डेट फंड, देन यू कैन गो फॉर एफडी, देन गोल्ड ETF, देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यू कैन से दैट बिकॉज अगर वो फेल हो गया तो समझ लो इंडिया का इकोनॉमी जाने वाला है, तो वो फेल नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका ये। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? आप लोग यू कैन इवन पुट अप योर क्वेश्चंस इन चैट आल्सो, एंड या आपको अगर आप रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो या कहीं पे कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी, वी आर देयर टू हेल्प यू। Okay, no, Pratik, it seems like no questions are So, there. Everything is clear. so You coming take to up. coming to the next question. So if we talk about the individual stocks, like we see we comment that this stock is overvalued. So how can we judge that stock is overvalued? Venki, can you take this question Yes. and guide our investors? Yeah. So what happens is when a particular stock is overvalued, how will you know that is the question, right? So here, let me take an example of Happiest Minds, Zomato to that matter. So what happens is, whenever you pick up a stock, whenever you pick a stock, you need to see whether that stock. See, there are two things. One is fundamental, and another one is technical. So fundamental is nothing but knowing the business, understanding, nook and corner of the business, and then invest in that particular stock. Technical says it's more of, giving assistance to the fundamentals. When I say, if I to invest in Infosys, I'll look into the business of the Infosys, and then, I'll look into technicals. The reason why I look into technicals is, to see the correct buying point, whether is this the correct point to invest in Infosys, or to that matter any stock. But before, in order to pick any stock, you need to see the PE of any company, price earning ratio. You need to see what happens there is. See, you need to first look into the industry PE. For example, Infosys, you need to see the IT sector PE. And if you take FMCG, you need to take the industry PE of FMCG, and then you need to see a particular stock, and then you need to kind of reconcile the industry, whether the particular stock PE is in line with industry PE. If it is not in line with industry PE, then you got to understand the reasons as to why it is not in line with industry PE. Look, if industry PE is, let's say, 30, and your concerned stock, or your particular stock is, let's say, 25, well and good. The PE, I mean, see, you cannot just invest in any stock basis PE. You need to understand the business as well, management as well. But speaking of PE, what happens in PE is, if it is less than industry PE, then yes, we can invest in this particular stock. It is not overvalued. But let's say a particular stock is overvalued like anything. Let's say industry PE is 30, but whereas it is 150. So then what happens? Then you got to understand, why this stock is completely overvalued. Well, there could be various reasons, because of their brand, because of their business model. See Happiest Minds here for an instance. See, business model of that company is too good, but if you see the valuation is too expensive, very, very expensive. So you need to make a call there. You need to make an individual call over there, whether this company is going to give this much returns, or whether this company is going to achieve this much turnover in next 5 years, 10 years time. Whether this company is able to justify
its current PE. You need to see all those things. So basically, in order to put simple words, two things: check with industry PE. If it is over and above industry PE, understand as to why it is over and above industry PE. And if a company like Happiest Minds, it's doing too good, then you understand. See the business. See, next 5 6 years, it's into. I mean, next 5 6 years is totally artificial intelligence, data science, and all these things. Yes, this company is into that kind of businesses. Then if you have belief on that particular business model, then you're good to go and invest in that companies. But I mean, one asterisk mark here is, if any company P is more than industry P, then you see why it is over and above that, whether it is able to, whether it will be able to justify that correct, I mean, that valuation that company has, and all you need to see. Yeah. Yes, brother. Venki, yeah, I want to add. So basically, we can simplify this thing is in few points. Like what Venki has already said, that P valuation by P check karo, okay, price to equity ratio. Then second, brand valuation. What is the brand valuation of the company? Then you can go for the future prospects, like Zomato का समझ लो, या any good companies जिसका future prospects we are thinking कि भाई बहुत अच्छा है उस हिसाब से. Then monopoly कैसा है मार्केट में कि भैया what is differentiating this company from the other companies, like HUL का तुम ले लो कि we have a good marketing strategy, फिर control है. जैसे for Nescafe you can say coffee या dairy products में what they do is वो पूरा मार्केट कैप्चर करके रखते हैं. इवन इफ कोई कंपनी दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तो व्हेन द कंपनी द बेबी कंपनी ओनली दे परचेज दैट कंपनी, जितना भी वैल्यूएशन में खरीदना पड़े वो खरीद लेती है कि कंपटीटर पैदा ही नहीं होने दो. तो दिस थिंग्स आर देयर, तो इसलिए दे गेट अ गुड वैल्यूएशन आल्सो 50-60. देन डेट, व्हाट इज द डेट कंटेंट इन दिस दैट कंपनी. अब देखना जो ज्यादा हाई पी में तभी वैल्यूड हो सकती है जब कंपनी में डेट नहीं हो. डेट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इवन इफ market is not performing and they are not able to perform, but उससे क्या होगा, कंपनी will not give you negative return, means there is a negative, very less chance कि वो आपको लॉस देगी. अब जैसे अबान ऑफशोर है या इन बहुत कंपनीज है जो डेट ट्रैक में ऐसा फंसी कि 2-3 साल बिजनेस जब डाउन हुआ तो दे गॉट लिक्विडेटेड, मींस नेक्स्ट टू लिक्विडेशन वाला पोजीशन आ गया. तो दिस आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड. अब इसको आप कितना परसेंटेज वेटेज दोगे, दैट इज टू सब्जेक्टिव. क्योंकि इसी अब आपके हिसाब से एक चीज का वैल्यू के हिसाब से आपका इतना पी होना चाहिए या इतना वैल्यूएशन होना चाहिए, कितना एड ऑन वैल्यूएशन होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, बैंकी के हिसाब से कुछ और हो सकता है. दैट कैन डिफरेंशिएट. इसीलिए मार्केट में डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव रहता है एंड डिफरेंट अपना अप्रोच रहता है कि भैया इतना इसका वैल्यूएशन ज्यादा है या इसका कम है. ओके, तो वी हैव एक्सप्लेन यू ऑल. और इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है. तो इवन यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Correct. Adding what Shubham has just explained, I just would like to share my screen and I would like to show you, how this particular thing works. I mean, as to, it is very simple. It's just that, you need to see with industry. Can you all see the screen? Shubham, can you see the Users, screen? please confirm. Yeah, I can see. Users, please confirm whether you are able. Yeah, we can see. Yeah. See, speaking of Happiest Minds Technologies, if you see this company, you see the stock P of this company is 134. But whereas you see the peer companies, see, again, this has been categorized under, computer software, medium and small scale. It belongs to a sector called IT software sector. So wherein what happens here is, again, in IT software, there'll be various things. One would be working on data sciences, one would be working on, artificial intelligence. Another person would be working on normal IT consultancy services. Here you need to see, these are the peer companies. Peer companies, PE, you need to see first. See, I mean, the company called Infosys, company called Oracle, company called L&T, you see all these P's. But if you see this Happiest Minds, it is overvalued. 134.44 is too much. It's overvalued. And here, what you need to, what you need to do is, you need to make a call. That, if at all, if you are investing in this company, you should understand the fact that, this company is overvalued. This company may not be able to sustain in the market tomorrow because of its competition. Maybe today it is going up because of its business model. Tomorrow, competitors may pitch in and this PE, and it may not be able to justify its PE. You need to understand all those things, and then you need to take a call. Again, as Shubham said, it is totally subjective. So therefore, what you should do is, whenever you get into these kind of companies, you need to make a call. And also, you should not be investing in these companies too much because it is already overvalued. And if you get stuck in this, your capital will get stuck, and you may be out of investing or you may be out of trading. So therefore, whenever you invest in these kind of stocks, be always little careful about this PE or valuation and all these things. One more thing I want to add. See, the Venki which added na, so I remember this point. See, always measure your risk to reward ratio. See, bhai, what is your target and what is your stop loss? Means how much risk you are taking to earn how much percentage of profit. Always try to have a minimized risk and maximize reward. Okay.
मीन्स प्रोबेबिलिटी देखो, नो वन इज गॉड एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट 100% करेक्ट, लेकिन सम आपके एजम्पशंस के बेसिस में, सब कुछ के कुछ बेसिस में एटलीस्ट प्रेडिक्ट लाइक दैट कि भाई रिवॉर्ड कितना, अगर रिवॉर्ड दिया तो कितना रिवॉर्ड दे सकता है, 30%, 40%, 50, 100, और लॉस में अगर गया भी तो हाउ मच लॉस, 10%, 20%, 100%, तो वो देखना होगा। लाइक हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जांपल दैट वेंकी हैज टेकन, इसमें आपको रिस्क बहुत हाई है। अब Oracle is also a good company, have a good market cap and a good market also, market share also, आपका इसका नेक्स्ट फ्यूचर नेक्स्ट 10 कंपनीज में भी आता है, एवरीथिंग इज गुड एंड इट इज वैल्यूड एट 20 रुपीज पी, so the chance of fall from that position is 10%, 20%, 30% maximum. But for happiest mind it might exceed to 50, 60, 70%. हाँ, तो risk and reward please ध्यान देकर रखो. Okay, thank you. Nicely explained when P ratio and this and Shubham risk reward ratio. So that we have to look into, and what we see about the future prospect, like company is into like in the IT sector. So all those things we need to see and check if company is actually overvalued, and if we have any expectations. Like some particular people have expectations, like if we talk about Zomato, some people think that it will grow multifold. So they are investing in it and having a high means vision that it will grow in future. But if means some of the analysts, like we also have commented on Zomato, like its valuation is totally wrong. It is overvalued. So it's based upon what we predict the growth rate in future. So coming to the next topic. No, Pratik, I think Manish have a question. Sorry, I am interrupting. Manish, you have a question? Manish Prabhakar? Manish, you raised your hand, so if you have a question, you can say. Otherwise, we can continue. Okay, we will take a question at that. Afterwards. So coming to the next question, like since we are investing money, we are emotionally attached with what we have earned. We have earned means our hard-earned money. So how can we control our emotional imbalance when we are going for investing in equity, like risk associated in equity? So how can we be patient and manage our emotional imbalance? So Manish, can you take this question? Just a second. I will get technique. Hello, am I audible? So, yes. So we are talking about the emotional imbalance, like investors investing their money, and they think that their money will they will not get any money. Means their major loss they will suffer. So they become impatient, emotional with the money they have earned. They are investing in the market. Okay. Okay, I am taking it up. Pratik, Manish, are you ready? Please take this. I will just be Okay, no issues. हाँ, no ठीक है। प्रतीक का पॉइंट है कि इमोशनल डिलेमा या इमोशनल जो पोजीशन रहता है, माइंड इमोशनल माइंडसेट जो रहता है, हम लोग सभी इन्वेस्टर्स का रहता है, तो हाउ शुड वी कंट्रोल दैट और हाउ शुड वी मैनेज दैट। स्पेशली क्या होता है ना, जब मार्केट स्टार्ट फॉलिंग अ लॉट या मार्केट स्टार्ट राइजिंग अ लॉट, तब हम लोग बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर। लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स ओनली। व्हाट हैपेंस कि इफ मार्केट इज राइजिंग अ लॉट, तो वी थिंक प्रॉफिट बुक करो, या अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट फॉल कर जाए एंड वी कैन लूज आवर प्रॉफिट। एंड व्हेन मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लगता है, तो वी कैन से यार कितना लॉस होगा, या हाउ कितना लॉस तक जा सकता है, यार ये सब वेरियस थॉट्स आने लगते हैं। मेरा तो पूरा मेहनत का पैसा लगा है, ये वो है ना, बहुत कुछ लोन पे लिया है, या दोस्त का लिया है, यार या मम्मी से एक्स्ट्रा लिया है, या पापा से, कुछ वेरियस रीजंस आर देयर। वी स्टार्ट पैनिकिंग। तो देखो, द बेस्ट सोल्यूशन टू कंट्रोल दिस पैनिक या दिस इमोशनल पोजीशन इज कि सबसे पहले तो पैसा इतना ही लगाओ मार्केट में जितना आप खो सकते हो। ये चीज हमेशा 110% प्लीज मेंटेन करो, ट्राई करो कि हम लोग को ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं। ये मत सोचो कि सपोज करो मनीष हैज गिवन अ कॉल, प्रीवियस कॉल दिया है उसने कोई, जैसे अपना आईटी का कौन सा कंपनी का रियल फाइनेंस में, जैसे कि 150%, 200% रिटर्न मिल चुका है, तो मनीष जो कॉल दे रहा है उसमें अगला फिर 150-200% मिल जाएगा, तो आई शुड बोरो फ्यू फंड्स फ्रॉम माई फ्रेंड। भैया 1 लाख रुपए देना, मैं 1 महीना में तुमको लौटा दूंगा, 1 महीना में मैं 100% रिटर्न निकाल लूंगा, एंड देन आई विल गिव यू 5% रिटर्न, या समथिंग लाइक दैट। या गोइंग फॉर अ क्रेडिट कार्ड कि भाई क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया 1-2% में कि एक महीना बाद बिल पेमेंट करना होगा, तब तक तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। तो वो सब काम नहीं करना चाहिए, तो उससे ज्यादा इमोशनली आदमी इम्बैलेंस हो जाता है, और उससे क्या होता है कि अर्ली एग्जिट कर जाता है, एंड उसके बाद हो सकता है स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप यू आर फोर्स टू एग्जिट दैट मार्केट या दैट कंपनी, बिकॉज आपके पास वो फंड, क्योंकि वो फंड आपका है ही नहीं, या आप फंस जाते हो। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं फंसा ग्लोबल स्प्रिट में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो आई हैव इन्वेस्टेड एट द प्राइस ऑफ 350 रुपीज। अब ठीक है, क्वांटिटी वॉज 100 आई थिंक, क्या
तो उसमें अब क्या हुआ, 1 महीना तक वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो रखा था और तो नीचे साइड ही था। तो मेरा मन के निकल जाओ, बोला नहीं, लेट्स कीप इट, वैल्यूएशन इज टू लेस, लेट्स कीप इट। 1-1.5 महीना बाद अचानक से जब वो यूसीसीज लेना स्टार्ट किया, तो अब वो 1.5-2 महीना में रिटर्न 350 से 950 पहुंच गया। और ऐसा नहीं कि खाली ग्लोबल से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कंपनियां जो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती है। लेकिन जब मेरा ये पॉइंट है कि वो मैं 1-2 महीना जो मैंने वेट किया और ग्लोबल को 350 से 300 के रेंज में ट्रेड होते हुए देखा 1-1.5 महीना, वो जरूरी है। मीन्स क्या होता है कि वी थिंक कि आज इन्वेस्ट किया, अगले दिन से परफॉर्म करें या 2 दिन बाद से परफॉर्म, वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और वो चीज के लिए आपका फंड वैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिसका आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कुछ रिक्वायरमेंट मत सोचो कि इन्वेस्ट कर जाओ भूल जाओ, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट नहीं है या उसके बिना आपका खाना पीना नहीं चल रहा है, या वो सब चीज, वो पॉइंट में बहुत ज्यादा ध्यान रखना इमोशनल डिलेमा को कंट्रोल करने के लिए। ओके, एनीवन वांट टू ऐड एनी पॉइंट इन दिस? इमोशनल डिलेमा। So ये अच्छा concluding टॉपिक था। to what Shubham has said, we should not borrow and invest in any case. Like even if we are thinking that we are earning more and we borrowing cost is less, we should not ever think of taking money in loan and investing. So how much the risk we can take, we should invest so that we can control our emotional dilemma in the market. And we should not be impatient. We should always think that if this world is going to stay for a long number of years, so nothing going to happen in a short term. So we should remain patient. So coming to the next question, uh, like what we are doing, we are having to miss two type of investment. One we are keeping it for the long term, and one we the calls we are giving in the short term, like 2 months, 3 months. Swing So trade basically. what should we do to separate and to calculate the earning from both of them? Like for long term, we are taking that, okay, we will get the CAGR of let's suppose 10% in 10 years. So how can we separate both the earnings? So Manish, can you? बेसिकली अपने को दोनों डीमैट अकाउंट्स अलग कर लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक आई एम ऑडिबल। Yes, you are audible, Manish. First of all, we need to do things that for the long term, we always must prefer a full-time broker for that. Like we don't do much transactions there because due to high transactions, high amount of brokerage will be generated. तो एक अच्छे फुल टाइम ब्रोकर के साथ अपने को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चलना चाहिए। एंड फॉर ट्रेडिंग वी शुड गो फॉर डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स बिकॉज दे आर फेयर। एंड सेग्रीगेशन का बात जैसे हम लोग का पहले भी हुआ कि फंड एलोकेशन, रिस्क एपेटाइट एंड इमोशनल डिलेमा, ये एक्चुअली कुछ नहीं, जस्ट एक जस्ट पार्ट है पूरा स्टॉक मार्केट गेम का। लाइक पीपल always think that oh this stock is stuck at some point of time and it's going down basically, but वैसा होता नहीं eventually, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अभी मैं एग्जांपल में लूंगा, they were undervalued for around 13-14 years and now they are becoming such a multi-bagger type returns, because just as you see as an example, a Titan at 2002, it was just trading at 4 to 5 rupees for around 3 years and after that it's now at 1800 rupees. So कंपनी का फंडामेंटल्स इज मच रेलेवेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रादर देन टेक्निकल। एंड टेक्निकल बस वो एक पार्ट होता है कि अपने को कभी भी जैसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत प्राइस पे ले लिया, नाउ आई एम स्टक फॉर 6 मंथ, कि मेरे को गलत प्राइस मिल गया, अब 6 महीने के बाद इस प्राइस पे आएगा। सो दिस इज जस्ट द थिंग। So coming to the next question, if someone has any question, they can raise hand. We will take it next. Okay, moving to the next question. So if someone want to start their investing journey, so what would be the minimum capital required so that he can start? Minimum capital, like it doesn't have any defined. Like if when I was a student at 2019, I started my journey with just rupees 700. I know I just purchased few penny stocks and after all वो लॉस नहीं गया। कभी मिला नहीं उसका पैसा वापस मेरे को। तो कभी भी उस पैसे को लेकर एंटर करना चाहिए कि जिससे हमको उसको फर्क ना पड़े। एंड इवेंचुअली स्टॉक मार्केट एक चीज है जो एक अपना डिसिप्लिन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर स्टार्टिंग विद 1000 rupees per month, then we should be very disciplined that we should add 1000 per month positively. Like just for एक महीने मैंने 1000 ऐड किया, सेकंड मंथ आई एडेड 5000 and again 1 month I didn't add anything just for next 6 months because मैंने 5000 6000 ऐड कर दिया। This shouldn't be the case because discipline in a perfect way makes a portfolio much better. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैंने 1-2 दिन का पोर्टफोलियो मैंने देखा कि बहुत हेवी अमाउंट एक स्टॉक पे दिए हुए हैं, जबकि सेग्रीगेशन बहुत ही खराब रहा था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था पोर्टफोलियो में कि वो अमाउंट रिकवर करना मुश्किल हो गया था। तो एक कभी भी एक डिफाइंड अमाउंट को लेकर जब भी हम लोग एंटर करें ना स्टॉक मार्केट में, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट अमाउंट एंड कैपिटल, बिकॉज मेनी
investors like who have made fortunes, like Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, they say the only one thing: don't lose your money. Like don't use your capital. Their money means the capital amount. तो अगर आप कभी भी कंफर्टेबल हो कि अगर आपके पास 5,000, यू आर ओके टू लूज इट जस्ट फॉर लर्निंग और गेनिंग a few bucks. So that 5,000 is very good. But if you are thinking that 5,000 is very high because अब मेरे को लग रहा है कि ये मेरे मंथली इनकम या किसी और पे इम्पैक्ट करेगा, then it's not good. So it must be your criteria that you should think how much you should. And if your amount is less than 100, then you must start from mutual fund SIPs. That's the best thing to do. So nicely One explained, thing, Manish. What we concluded, we should start on an early age. If we are a student, there is no cause. We can start with a 500, 700, like Manish has said. So we should start in an early age. We will get the effect of compounding, and we should not think about the minimum investment. We can start with even 500 rupees, and we should be regular. Like where if we have invested, we should regularly put money, save money, and keep investing. That will yeah, give you the compounding effect. yeah. The most important हाँ, point is discipline. भाई वो maintain करना please everyone. Exactly. डिसिप्लिन अगर मेंटेन है, मनीष ने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है. इफ यू आर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ना, आपका कॉर्पस या कैपिटल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा या पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन इतना बढ़ जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा और टाइम स्पैन का पता नहीं चलता है. इफ यू आर डिसिप्लिन यू कैन अचीव एनी अमाउंट. वही वो रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The Prem has got a question now. Yes, Prem has just asked a question. Ask Prem. या So, why do some companies do not have a PE ratio? They have they have the P ratio. Just you need to find out because actually when you will be very in depth researching very in depth in the market, you will see that they are very low P, very negligible because they are micro caps. तुम कैसे उसके वैल्यू करोगे उस कंपनी को? Yeah, sometimes what happens, Prem, the company would be making losses. They might not want to, या they might not want to report negative PE. So therefore, there will not be any PE ratio. But that's such kind of companies. A few companies, PE ratio would be 0.00001 odd. So what they do is, let's not show this They don't. instead of showing in decimals. So that would be the thing. बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी डज नॉट हैव अ पी. या Exactly. Yeah. Technically, there will be a negative PE, but there is no such thing called negative PE. हाँ. Any more questions? uh, ओके, प्रतीक यू कंटिन्यू. so coming to the next question. So how much number of stocks we should keep in our portfolio to have an ideal ratio, and in what proportion we should segregate it? So Venki, can you explain our Sure. So again, speaking of portfolio, so think what happens here is, let's say a newbie has come into the market and his investment amount is, let's say, 2 lakh rupees. And what he should be thinking is he would come with this attitude. Look, I have a 2 lakh rupees. I just want to make 4 lakh rupees in 1 month, 2 months time. So what he'll do, he'll search for good penny stock and he'll invest entire amount in it. So in 1 month's time, if his luck is too good and if he's lucky, it will become 3 lakhs. In many cases, 99% of the cases, what happens, he will start loving the market, he will and start loving the later market. on market will start hating Playing with his career. Correct. It's like honeymoon period. So then the real fun starts. Let's say you have invested in 10 rupee a penny stock and you have invested 2 lakh rupees over there. If your luck is good, it will give you 100% returns. If your luck is bad, by chance if your luck is bad, of course the luck won't be good for sure. Many a times it will become, your capital will become 1 lakh rupees. Then you'll start thinking, okay, so what happened in this? Then again you would like So to test. some person realize that it is a fully bogus thing, and he should not come in the market and start FD and have a safe life. Okay, Correct. balanced life. Someone wants the balanced life, so he will have the balance. Correct. And he'll get a wrong picture about the market. What he'll do, he'll simply square off his position. He'll book a loss. He'll book losses, and he'll come out of the market. He'll never look at stock market again. So such kind of things, we should all mitigate. So it's not like we have not done this. Of course, we have done this, and therefore we have learned a lesson. So therefore, how you should keep your portfolio. So the thing is, let's say you got 2 lakh rupees capital. See, let's say somebody has told you that Infosys is very good. It doesn't matter, any company is good. What you need to see is, you should not be keeping entire capital out there. So look, if you have 2 lakhs, just 10% of your capital, just keep it in that stock. And as and when, see, before investing for long term, so again, there are two things here: long term and short term. If you are doing it for long term, so long term means, it's not like, keep some 2 lakh rupees in one stock and you forget about it. It's not like that. Just invest some 10% or 15% in one stock, and again, wait for the opportunity. In case if that very good stock goes down, then again you invest 20%. And again, if it goes down 30%, then what happens, so after a particular point, it's not like, stock will keep falling down all the time. But sure, it will retrace. So therefore, you need to keep investing like this. Again,
when a person says, the stock is too good, and if it goes, it will go 200. It says it is a multi-bagger. Whatever, blah blah blah, they would say. But what you need to do is you need to understand. See, I'll tell you my own funda. Let's say you take VLS Finance. VLS Finance, it was in 250 rupees. I was waiting for the correct point. I bought some at 200 rupees. It was not a correct point, but still I bought 200 rupees at 200 rupees. Correct point was somewhere around 175 to 180 rupees. It came down to again 180 rupees. What I've done, I knew that this particular stock again will go down. That is a calculated risk. If I put entire my capital at 200 rupees, on very next day, that stock has gone to 180 rupees. I would have gotten scared. See, look, entire my capital is gone. The 20% is gone now. So you cannot just digest that. So therefore, what you will do, you'll either you borrow money or you'll book losses, and you'll take away your rest money. So therefore, what I am trying to tell here is no matter how good the stock is, just invest 10% or 20% of your capital, and then move on to other stock. In case if that 10% or 20% stock has come down, you average it out. So try not to keep entire amount in one particular stock, no matter how good that stock is. If you keep Yeah. if you keep like that, your money is stuck in the first place. First thing, second thing, you'll not be able to get into the market. Third thing is you'll not appreciate the market. So therefore, always maintain discipline, and Yeah. follow one. So like how you invest in mutual funds. In the same way, you start investing in the stock market, equity market as well. Yeah. So yeah, to conclude, I want to add it. To conclude, you can say that you should have a ideal portfolio should contain of 20 to 30 stocks, 30 to 30, 40, 20 to 30 good stocks, and means allocation can get differentiated, but you should not get for a single stock, you should not go above 5 to 7% or 10%, and minimum 2 3% 3 4% you should maintain. कि भाई not putting all the eggs in a single basket वाला concept है. Okay, so this is. And one simple thing is always diversify your stocks throughout Yeah. industries, good industries. You need to see the industries as well before putting any money in, let's say, FMCG. FMCG is not doing that great now. So you keeping entire money in FMCG or 50% of your money in FMCG is as good as you not participating in the market. Your capital is stuck over there. After a point, what you will do, you'll simply take out the money, and you will do some mess with that. So therefore, always diversify your money. Yeah. So yeah. Industry specific diversification should be there, yes, and then stock. Yes. There is a question from Rashmi Sharon now. Now, how do you decide a specific time or price to invest in a particular stock, especially using statistics and graph parameters, MACD and RSI? So MACD is Venki's portion. You can share your screen, and RSI I will be taking. Sure. See, before getting into it, one thing, okay. See, these indicators are something. These indicators will give you guidelines. So this is Okay, the particular point. let's just keep this entire section of the fundamentals and discussion till here, and now we are getting into the technical things. Yes, this is Like the charts technical and point. Correct. okay. So what happens in MACD is, see, let's not get into the logic of MACD. What is MACD? How it works and all, because we do not want to become, what do you say? We do not want to become that. What do you say? Scientists or scientists and all those things. Let's use the formula. And We only want application. Yeah, let's apply that particular formula and be done with that stock. How to use it? Yes. Yeah. Okay. Now I will show you how it works. So yeah, I'm simply showing you because you need to understand how it works. For example, can you see here? Can you see all the? Can you see the screen over here? Yeah. Let me. Yeah. IFB is this. Tell me some other stock. Okay. So IFB also I can take any stock. Next suggestions. Let's take from the chat. ITC. Yeah. Sorry. IPC. ITC, someone said. ITC is dead stock actually, so you do not get to see much. But anyways, I'll explain through. ITC. Yeah. See, this is MACD. So MACD, what happens is there are two things. So I'm just explaining. These are not relevant for you, but simply I'll explain. See, there will be something called these are the inputs, and the length of this particular. These are all statistics. If you want to understand statistics, I'm happy to explain. Given the short time frame, what I'll explain is this. See, you get to see two lines over here, right? One line is blue line, another one is orange line. Okay. One thing, okay. Before getting into any stock, if blue line is cutting orange from top, means that stock is going to fall down for that particular this thing. So see here, I'll show you the instances. Yeah. See, in this case, in this particular 9th June. 9th June is the day on which it was about to cut blue, about to cut orange. It cut orange, it fell down. See, I'll show you the vice versa cases where blue is cutting orange from below. So what happens here is, you see here blue cut orange. Here you see it was red. Here it was about to cut. Here it cut. It went up.
So this is what you need to see. And before investing in any stock, there is some. I always follow Ichimoku. Ichimoku, again, there are various things in Ichimoku. One is lagging. Like, I mean, I'll just show you Lagging this. span, Kijun Yeah. frame. Yes. There will be conversion line, baseline, lagging span, lead one, lead two. All you need to do is two things: conversion and baseline. You just take these two and try to see. You know, here all you need to see is crossovers. What is happening here is, I mean, again, whatever I'm saying, I mean, appears like, some, what do you say, without any logic. No, these indicators are designed with very much logic. If you get into the logic part of it, you will appreciate it, but you are not required to appreciate. All you need to do is this. In Ichimoku, what happens? See here, same logic. If when blue is cutting red from below, meaning thereby is it is changing its direction. See here, at this particular fine day, 16th July, so blue was cutting red and it got merged, and it got merged and all, it's gone up. See here, the day at which it cut red is 19th July. CMP was 207 rupees. Now it is 211 rupees. Okay, let's take a very good stock and let me show you the real power of these indicators. So let's say It is to the futures or options. futures and options. Huh? They are really much more accurate. The ITC futures, just below that. Yeah, ITC futures. Current one. Okay, for This is, some reasons it is it, not working. It is not a paid it, version. Let me go to stocks only. hmm. It will become too much. Let me go to this particular stock, Godavari Power. Okay. So see here, Godavari Power. What happens is, what happened is, see here, on 18th February it was underdog, 500 rupees, and even weekly will go. Weekly would be very easy to see. Yeah, you see here. Ichimoku, okay. See, on this particular day, on 16th April 2018, if you wanted to invest in, I mean, let's say you wanted to invest in Google, I mean, Godavari Power, and you wanted to know whether that is the correct point or not, because it has given very good rally from here. From 96 rupees, it went up to 500. Nobody would have expected that it would go to 1700, 1800. At this particular point, you want to understand, I mean, is this the correct point or not? Yeah. So on 4th June, because from 500 rupees to it has come down to 320 rupees. Now you want to understand whether this is the buying point or not. Now what I would say is, I would simply say this: if see here, if blue is cutting from below, that means it is a positive direction. If red is cutting from top means, if blue is cutting red from top means that is a negative direction. Here what is happening? Here blue is cutting red from top. That means I would not have entered into it, and I will come and see in MACD. In MACD there is no signal about it. In MACD, it was clear cut thing. There is no crossover, nothing. So therefore, if at all, if I wanted to invest for long term, I would not have invested. I would have simply kept quiet. Now, then let's come to this particular time, 27th August 2018. Here, what is happening? Here it is about to cut red. So therefore, once it cuts red, once it gives crossover, then I'll enter at this point. See here, see MACD here. MACD here, it has given a crossover. If you see, blue has cut orange. So from here onwards, I would have simply kept the stock. I would have simply kept the stock, and I would have held the stock for some time. But after a few days, let's say 3 months, it did not perform well. What happened? Again, this blue cut red from top, and it blue cut red from top, and there is no indication in MACD. Then what I'll do is, what I'll do is, I will square off my position, because it has changed its direction. Here it has given positive direction for me, but here it has given negative direction because blue is cut from top. I will exit at this level, 409 rupees. So again, I will look for some crossover, positive crossover, and then I'll try to enter into this market. See here, COVID market. In this COVID market, see here. Here it is cutting this particular on 27th July 2020. This blue is cutting red from below. That means what? It is a positive direction. See, if it has cut and it made a red candle. 176 rupees is the price. I would have simply invested in it, because I will only exit from this particular thing only when it gives the negative direction. See, it has never given the negative direction till date. It has been positive from 176 rupees to 1700. It's been positive. See, at 176 rupees, what was this MACD telling? MACD wasn't saying anything on this date, but MACD was telling something on first 26th May, much before this. So basically, these MACD and stochastic indicators are only for intraday or swing trades. You cannot keep it for long term. But Ichimoku, you can keep it for short term and even for long term. See here, at this particular level. So if you see here, the stock price was how much it was? 117 rupees. It gave a crossover. From here onwards, it went up. From here, rally started 142. But whereas in Ichimoku, it started at 178, 180 rupees.
Now, when you get 2 or more confirmation from indicators, that means your timing is good. If you are not getting any confirmation, just do not invest in that stock. Just wait for the correct moment. It's not like you have money and you need to invest. Wait for the time and wait for the correct time, and then you invest. So MACD works like this. MACD is nothing but this. There are 2 lines. If blue cuts this orange line from top, that means a negative sign. If blue cuts orange from below, it is a positive sign. So is with Ichimoku. Yes, Manish, you could go to RSI. Yes, sure. I am going to let me share my screen. Is it visible? Yeah, it is. It is. Okay. So for RSI, just okay. Now we are discussing RSI. Actually, RSI, we can't be very sure about the buying and the selling on the RSI. RSI basically depicts the strength of the stock, or whether it's in strength area or it's in weak area. Like I was analyzing this Britannia. Let's just go with one thing. I will go and get into RSI very soon. Let's just go into the support, resistance, and all the thing, because many of us are new here. So let's just do this one thing. Like, see, this is the chart of Britannia. You can go to chart with this trendline tradingview.com. Anyone who can visit it, it's free of cost, and you can just search the stocks and go with it. So यहाँ पे क्या है कि जैसे अपने लोग को होता है ना कि एक स्टॉक एक सर्टेन लेवल तक जाता है एंड देन आफ्टर इट फेल्स, बिकॉज एक सर्टेन टाइम का एक सर्टेन वैल्यूएशन होता है जो वहां तक पहुंच के वो रिट्रेस करता है. वैसे जैसे कोई भी स्टॉक्स अगर हम लोग एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, अब जैसे यहाँ पे जस्ट सी ये एक अपना हाई बनाया ब्रिटानिया एंड आफ्टर दैट इट फेल यहाँ पे आया दिस पोजीशन. लेट मी मार्क इट दिस वन, एंड फिर यहाँ से ये गिरा गिरा एंड अगेन ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया एंड दिस वाज द फोर्थ सपोर्ट. सो जस्ट हैव अ लुक कि ये एक वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक उतना ज्यादा वैल्यू पे हो चुका है एंड यू विल सी द पीई ऑफ ब्रिटानिया इट्स वेरी हाईली वैल्यूड. सो इट्स जस्ट मेकिंग अ फ्यू करेक्शंस हियर, बिकॉज स्टॉक को अभी उतना हाई पे कोई खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है. जस्ट अ सिंपल केस. And just see the RSI below that. You can put RSI here, like those who are new. Just go to indicators and type here RSI, Relative Strength Index. यहाँ पे इसको लेते ही ये वाले ग्राफ आ जाएंगे. And now just see, have a look. RSI कभी भी वो डिपेक्ट नहीं करेगा कि whether the stock is a current buying position or not, but it will rather support the support because ये price support है. And just see the RSI below that. ये RSI. It's again at the lowest levels. एंड RSI के भी डिफाइंड वो होते हैं, सेक्शंस होते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आई हैव ऑलवेज यूज्ड द 80 एंड द 20 यूज, एंड यू कैन चेंज इट हियर 70 50 30, यू कैन डू एनी ऑफ दैट. तो ये जब भी कोई स्टॉक बहुत कम वोलेटिलिटी वाले हैं उसको हम लोग हमेशा 80 to 20 पे रखेंगे, एंड जो भी हायर वोलेटिलिटी वाले हैं उनको हम लोग 70 एंड 30 पे रखेंगे. सो जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनाया तो RSI भी नीचे अपने लोअर बैंड पे था. यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया, RSI भी अपने लोअर बैंड पे था, एंड बोथ फॉर दिस टू. यहाँ पे भी RSI अपने लोअर बैंड पे था. तो दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन दैट यहाँ पे मेरे को अच्छा प्राइस मिल सकता है. ये कंफर्मेशन है, ये टूल है जो कंफर्म करेगा कि दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय. तो अब क्या होता है, अब लेट्स प्रेडिक्ट दी आगे का मूव क्या होगा. इट्स अ टाइप ऑफ पैटर्न, लाइक इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं. देयर आर मेनी पैटर्न्स इन टेक्निकल एनालिसिस लाइक फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न. ये एक फ्लैग पैटर्न होता है. इट्स फॉर्मिंग जस्ट अ टाइप ऑफ फ्लैग. ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया स्ट्रेट रैली एंड आफ्टर दैट इट्स कंसोलिडेटिंग. एंड यू कैन सी ब्रिटानिया एक बार एक ऐसा मूव दे चुका है ऑलरेडी इन द पीरियड ऑफ 2015 to 17. जस्ट एक स्ट्रेट रैली दिया फ्रॉम ₹399 टू अप्रोक्सीमेटली एट दिस लेवल्स 1700 के बाद ये कंसोलिडेट किया अराउंड फॉर 1.5 ईयर, अराउंड फॉर 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का कंसोलिडेशन. एंड जस्ट सी अगेन ये इसको ब्रेक किया था, ये अपना ये पैटर्न ब्रेक किया. दिस इज दिस रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम हाई अमाउंट द बायर्स आर पेइंग द प्राइस. यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस को टच किया, एंड जस्ट सी द नेक्स्ट मूव हियर फ्रॉम 1700 टू 3500. सो इट्स जस्ट गेटिंग डबल्ड एनी टाइम्स. सो अब अगर हम लोग अब यहाँ पे लेते हैं कि अगर इस पैटर्न को ये ब्रेक करे, यू कैन हैव दिस, बिकॉज हम लोग अभी तक इसका कॉल नहीं दिया जस्ट बिकॉज ये अभी ऊपर पार नहीं किया है. बट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ब्रिटानिया वंस द ब्रिटानिया क्रॉसेस दिस लेवल्स. दिस इज अ फेक आउट. लाइक ये कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोग ट्रैप करने के लिए यहाँ पे ऊंचे ऊंचे प्राइस पे करते हैं, एंड दे एक्चुअली ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर्स.
तो कभी भी अगर ये इस लेवल्स पे आए, लाइक ब्रिटानिया व्हेनेवर कम्स टू अराउंड 3300 लेवल, इट्स अ ग्रेट पिक, बिकॉज यहाँ से ये नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफी वॉल्यूम्स है। जब भी ये गिरा है तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिया है। तो एंड यू विल सी दैट व्हेनेवर द ब्रिटानिया विल बी कमिंग टू अराउंड 3300 levels, you will see that RSI will also be at around 30, which will which will just act as a support, कंफर्मेशन ऑफ ए सपोर्ट। सो यहाँ से अगर ये पुल बैक करता है एंड वी कैन सी दैट अगर ये बहुत ज्यादा कंसाइज हो गया तो एक दिन ये ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, एंड आफ्टर इट विल फ्लू, एंड उसके बाद फिर ये रुकेगा नहीं, लाइक इट विल समवेयर गो टू अराउंड 6000 और 7000 अमाउंट। सो दिस इज द केस ऑफ RSI। नाउ लेट्स गो फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस चार्ट को छोटा करते हैं। वो स्टॉप लॉस का जो बात था स्टार्टिंग में ही, दैट वन, लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग्स हियर। ओके, सो ये रहा सपोर्ट। जैसे सपोर्ट इज अ थिंग जहां से कभी भी स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करता है, दिस इज द सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस होता है ये जहां से हमेशा नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है स्टॉक। सो दिस इज द थिंग इन इंट्राडे। हम 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ सिलेक्ट किया है, इट्स अ 15 मिनट चार्ट। एवरी कैंडल इज फॉर्म्ड आफ्टर 15 मिनट्स, दिस इज 15 मिनट, आफ्टर दैट 15 मिनट्स, एंड दिस इज गोज ऑन, देन दिस गोज ऑन। सो अगर हमको इंट्राडे करना है, या लेट इट बी इन अ डे फॉर्म टू, लाइक जस्ट पुट इट इन डे and just keep it here, like we can't find because it's a good stock. Let's go for any other stock, Midhani. Okay, so यहाँ पे भी सेम चीज है, जस्ट सी हैव अ लुक, बिकॉज ये भी बहुत एक अच्छा स्टॉक है। प्रतीक भैया माइट हैव सीन द फंडामेंटल्स ऑफ इट, मिश्रा धातु। तो ये अपना सपोर्ट है। सो व्हेनेवर मिश्रा धातु कम्स टू अराउंड 170 लेवल, इट्स अ ग्रेट पिक, बिकॉज यहाँ से बहुत ये नीचे नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वो बताया था ना, एशियन ग्रेनेटो, काफी लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी बाय द वे, दिस वन, जस्ट हैव अ लुक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, एक बार ये सपोर्ट पे था, एंड आफ्टर दैट इट ब्रेक। जब ये सपोर्ट ब्रेक किया तो ये और नीचे आ गया, एंड इनफैक्ट यहाँ से ये रिट्रेस करने का ट्राई किया। यहाँ से ये ओपन हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ। अगर कैंडल्स का आप लोग को आइडिया हो तो रेड कैंडल्स मींस हमेशा एक हायर ओपनिंग और एक लोअर क्लोजिंग, और ग्रीन कैंडल्स मीन एक लोअर ओपनिंग और एक हायर क्लोजिंग। सो ये कैंडल क्या हुआ, ओपन हुआ हायर पे, ये सपोर्ट के पास ओपन हुआ, बट पीपल आर नॉट पीपल आर नॉट गुड टू पे दैट प्राइस, सो ये हल्का सा वापस रिट्रेस कर गया। सो नाउ अब क्या है, अब ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है, दिस वन विल बी माय नेक्स्ट सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है ना तो आई विल एग्जिट फॉर अ शॉर्ट टर्म। एंड ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल्स के साथ हमेशा कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई स्टॉक बहुत ज्यादा वैल्यूड है, बट अभी के टाइम पे वो अंडर परफॉर्मिंग रह सकता है। जस्ट एग्जांपल जो मैंने बोल रहा था कि बहुत दिन से जो लोग अंडर वैल्यूड है, जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील। ये अभी 1500 पे है, एंड जस्ट सी ये कुछ दिन पहले तक ये कैसा था, जस्ट हैव अ लुक। लेट्स डू इट इन वीकली, जस्ट सी। ये स्टॉक 24 दिसंबर 2007 को 900 रुपीज का था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जस्ट सी लुक व्हाट हैपेंस, ये कांस्टेंट ये डाउन डाउन ही रहा, ये कभी भी एक अपना अच्छा ट्रेंड नहीं बना पाया, जस्ट बिकॉज ये क्या था कि यहाँ पे एक अच्छा ये अपना सपोर्ट दिया था। ये सपोर्ट एक ऐसा चीज होता है ना कि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इवेंचुअली एनी डे। Just see, this was the support made at 2008. This was the support at 2008, and the same support was followed at 2013, and same support was followed at 2015. Years का फर्क नहीं होता support and resistance में, they follow the support and resistance. And just now see what happens. Once this consolidation gets over, like ये जब भी ये consolidation over हुआ, just see the same pattern I will make, a flag pattern. Just see here. ये अपना सपोर्ट को था, ये अपना सपोर्ट ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया। ये रिटेस्ट के टाइम पे भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड पे नीचे रहा था, क्योंकि दिस वाज एट 2018, एंड फ्रॉम 2018 टू 2020 ये नीचे ही रहा। एंड दिस इज जस्ट द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि यहाँ पे मेरे को डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है जो हम लोग को दिखता तक नहीं है, बट इट हैपेंस देयर। सो ये अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया, एंड नाउ जस्ट इट्स फ्लाइंग अबव। सो ये सेम चीज होने वाला है ब्रिटानिया में भी, लाइक एक रैली आएगा जो इसको कोई रोक नहीं पाएगा ब्रिटानिया में। इट्स द सेम केस है। दिस वन, सी दिस इज द सपोर्ट इट्स मेंटेनिंग। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, सो हम लोग इसको कभी भी वो नहीं करेंगे। जब से ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम लोग इस पे बाइंग, बुलिश बाइंग कभी नहीं करेंगे। आइदर वी विल होल्ड इट और वी विल जस्ट लीव इट एज इट इज, लाइक कभी भी नेगेटिव एवरेजिंग नहीं करना है। एंड दिस वाज द रेजिस्टेंस, और ये इसका सपोर्ट है। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द स्टॉप लॉस थिंग। सो स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, लाइक इफ वे स्टॉक ट्रेंड्स एट दिस, लाइक वी आर, आई एम ड्राइंग वन थिंग,
लाइक सपोज ये स्टॉक ऐसे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, नाउ पीपल विल स्टार्ट बाइंग बिकॉज ये एक लेवल को ब्रेक कर दिया. नाउ व्हाट इफ अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाए, ये ब्रेकआउट वगैरह सस्टेन करके ऐसे ऊपर नहीं जाके ये वापस ऐसे अगर नीचे आ गया, सो व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? माय फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी दिस वन, दिस लेवल विल बी माय फर्स्ट स्टॉप लॉस, दिस लेवल्स, एंड आफ्टर दैट ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट जो था ये मेरा रहेगा नेक्स्ट स्टॉप लॉस. And just see the price difference. It's just 3,500 and 3,400. It's not even 20%. जो मैंने ग्रुप में लिखा था कि we should not always face the 20%, 40% and those such of stuff loss, because हर एक का एक स्टॉप लॉस का वो है, क्योंकि हम लोग कभी भी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे जस्ट बिकॉज इफ द कैपिटल डिप्लीट्स, वापस उस कैपिटल को रिगेन करना इज वेरी मच टफ. सो दिस वाज द स्टॉप लॉस थिंग. हम लोग को हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस देना है. नाउ अब क्या क्या होता है कि कभी कभी कोई स्टॉक्स दे आर मेकिंग हाइज एंड हाइज, अब पता ही नहीं चलता कि वो रुकेगा कब. सो फॉर दैट लाइक कोई ऐसा स्टॉक जो दैट इज मेकिंग हाइज ओनली, एनी सजेशन? Happiest Minds is making all time high. Okay, happiest minds. IRCTC. You could take IRCTC. Yeah, sure. IRCTC. ओके, सो यहाँ पे इसको डेली पे स्टार्ट शिफ्ट करते हैं. ओके, लेट्स सी देन. ये अपना IRCTC का चार्ट है, ये अभी बहुत अच्छा रैली दे रहा है इनफैक्ट. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल जस्ट मार्क द सपोर्ट लेवल्स. ये एक रेजिस्टेंस था. एवरी टाइम वेयर द स्टॉक टर्न्स टू डाउन ट्रेंड, दैट विल बी अ रेजिस्टेंस. तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, एंड नाउ दिस वन इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस लेवल्स अपने मार्क्ड हो गए. अब क्या करना है, वी विल डू दी देयर इज वन थिंग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट. सॉरी, this is Fibonacci retracements. ओके, सो यहां मैं क्या करूंगा कि ये भले ये स्टॉक यहां से यहां तक आया नहीं, बट दिस वाज द फाइनल डाउन ट्रेंड. मतलब अगर ये इसको नीचे आना होता तो ये यहां तक आता, बिकॉज दी once the support is broken, that's the when the resistance is broken, it's the support, it's the next subsequent support. अगर ये स्टॉक जस्ट एज एन एग्जांपल लेते हैं, लेट इट अगर ये ऐसे ऊपर जाता है तो ये मैक्सिमम इतना डाउन ट्रेंड दे सकता है. सो अगर ये यहाँ पे आया तो वी विल ऐड, एंड इफ इट ब्रेक्स दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, बिकॉज ओनली आई विल टेक 5% एज अ स्टॉप लॉस हियर. सो ये अपना हो गया वो बात. नाउ लेट्स जस्ट गो टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की हाउ टू यूज इट टू डिटरमाइन कि ये कितना ऊपर तक जा सकता है, व्हाट इट्स प्रोबेबिलिटी. सो दिस वाज माय पॉइंट वेयर द रेजिस्टेंस वाज देयर. जस्ट कुछ नहीं, इसको उल्टा करना है. वी विल टेक इट टू द सपोर्ट. जस्ट सी, मेरे को मालूम नहीं था कि ये कौन से लेवल्स पे आएगा, बट सी देयर लेवल्स आर ऑटोमेटिकली मार्क्ड exactly near about few levels. It's 2500 और यहाँ पे दिखा रहा है 2700, यहाँ पे दिखा रहा है 2680. just see, just a difference of 50 rupees, and यहाँ से ये रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया. so that's the beauty of टेक्निकल एनालिसिस कि ये कुछ कुछ अपने पास टर्म्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि स्टॉक का फाइनल मूव कितना दे सकता है. देयर वाज दिस वन स्टॉक जो मैंने बताया था, VLS फाइनेंस. ओके, सो जस्ट सी, ये सब जगह यूज मिलेगा मेरे ड्राइंग्स पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स. जस्ट हैव अ लुक. ये इस पोजीशंस पे था, ये इसका सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस जो ये ब्रेक किया, ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल जहां पे मेरा कॉल था, ये अराउंड 95 के आसपास मैंने कॉल दिया था जस्ट बिफोर ब्रेकिंग ऑफ इट, एंड ये इस लेवल पे ये इतना हाई किया. सो नाउ दिस विल बी माय रेजिस्टेंस, बिकॉज यहां से डाउन ट्रेंड दिया. अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इसको एक फिबोनाची बना दूंगा. नाउ जस्ट सी, ये इस लेवल को क्रॉस किया, यहां से ये हल्का रिट्रेस, एंड देन अगेन इट ब्रोक. यहां से ये दिया, ये अगेन इट ब्रोक. This was the level, it came down, and it again goes up. So just have a look कि ये levels बहुत ज्यादा important होते हैं. I think किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा. I think अगर कोई है तो पूछ सकते हैं, मैं पूछ नहीं रहा डाउट्स के लिए वैसे. Any doubts? No. Okay. So ये रहा अपना फिबोनाची. एंड RSI कभी कभी क्या होता है कि ये 80-70 लेवल क्रॉस कर जाता है. सो कभी भी ये नहीं सोचना है कि RSI जब भी 70 और 80 लेवल्स क्रॉस करता है तो इट्स वेरी हाईली प्राइस्ड, व्हिच पीपल से एज ओवरबॉट. बट वो नहीं सोचना है. ये सोचना है कि व्हेन इट द स्टॉक इज गेटिंग ओवरबॉट, इट्स अ गुड साइन दैट इट हैज स्ट्रेंथ. इट्स नॉट द से, वो कभी ये नहीं बताएगा कि पीपल मार्केट में कितना ज्यादा बाइंग कर रहा है. इट्स जस्ट दैट पीपल आर वेरी कन्वीनियंट टू पे दैट प्राइस, क्योंकि RSI यहाँ पे भी 70 के ऊपर था when the stock was at 66 levels, and RSI यहाँ पे भी 70 के आसपास है when the stock is at around 100 levels, 150 levels. So इस पे कभी भी अपने को वो नहीं डिटरमाइन करना है. एंड सेकंड रॉन्ग थिंग कि पीपल कभी कभी क्या करते हैं ना, इसमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं. जैसे अपने ट्रेंड लाइंस बनाते हैं और ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक हुआ, लाइक दिस वन, कोई भी ऐसे ट्रेंड लाइन रहा. एंड कुछ लोग होते हैं कि RSI में ट्रेंड लाइन बनाते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग. लाइक ऐसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड नाउ इट्स गोइंग अप. इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये कभी नहीं करना चाहिए.
RSI में 2-3 चीज और होता है, जैसे RSI डाइवर्जेंस हो गया एंड ऑल, वो अपने किसी दिन दूसरे पे ले लेंगे. इट्स मोर देन एन आवर, हाफ एन आवर वी हैव डिस्कस्ड, 1.5 hour वी आर डिस्कसिंग. हाँ प्रतीक, मनीष Exactly. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है तेरा, लेकिन हाँ अब इसके ऊपर अब पचेगा नहीं लोगों को. वही और एग्जैक्टली. इवन सो वो दोनों ने बहुत अच्छा दिया. इवन मेरे लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग था ये, तेरा भी एंड वेंकी का भी. यार इट वाज रियली गुड. ओके. ओके नाउ लेट्स टेक अप द क्वेश्चन. अगर कुछ लेट्स है. टेक अप द क्वेश्चंस नाउ. हाँ है ना. Exactly. तो एनी क्वेश्चंस भाई देखो. एंड यू कैन नाउ सी द टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रतीक, दिस मनीष एंड वेंकी. तो यू कैन एनी टाइम गो टू देम एंड टेक्स्ट देम एंड ask for help. They will always help you out. Yes. And for fundamentals What was the also. name of the you were Okay. using? Yes, Prem, say. What was the name of the website? Trading View. Yeah, Manish, Rashmi Saurav has got a question. Yes. She's Can you also asking, take example of chemical stocks, say Aarti Industries or Deepak Nitrites with Fibonacci retracements? Okay. ये again technical का question है. So I will be taking up this and I will be responding you via our Provedo number. No worries. Any more questions regarding like leaving the technicals? Like as a overall. If someone has a question, they can comment on our Instagram. We will respond you definitely in the Instagram list. हाँ Insta, yeah, Yes. Insta you can use, yes. To do official, you comment on the Instagram and then we will take up the questions. And here में यहाँ पे आपका any कोई overall questions, अब in detail technical या कोई in detail मत जाइए. और कोई simple questions या कोई doubt type में है तो you should ask. Otherwise I have a question over here. Mhm. Yeah, so we recently knew that Afghanistan has been taken over by Taliban. So will it have any effect on the Indian stock market coming upcoming week? See, the impact of the Taliban taking up the Afghanistan means अगर आप प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो तो इट्स नॉट दैट मच. बट अब नाउ डिपेंड्स कि अब वो यूएसए में कितना इम्पैक्ट कर जाता है. क्या होगा, तालिबान में यूएसए का फोर्सेस बहुत ज्यादा था तो वो लोग के मतलब बहुत फोर्स उठा लिया गया, लेकिन बहुत सारा उनका पार्ट वहीं पड़ा है. क्या नाम है, इक्विपमेंट्स बहुत सारा वहीं पड़ा है, हेलीकॉप्टर एंड आर्म्स एम्यूनिशन बहुत कुछ पड़ा हुआ है. तो द पॉइंट इज अब तालिबान कितना हाईली अफगानिस्तान को इम्पैक्ट करता है, कितना बुरी तरह बर्बाद करता है. बेसिकली सीरिया टाइप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो सब अभी बहुत ही हाई लेवल कमेंट्स हो जाएगा वो. अब क्या होगा, सपोज करो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एंड वो फिर यूएसए के मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो करेगा क्या होगा इमोशनली. वो क्या होता है, एक अटैक ऐसे यूएसए का कुछ नहीं कर सकता तालिबान, उतना उन लोग का क्षमता है नहीं. लेकिन क्या होता है वो एक इमोशनल अटैचमेंट टाइप या उस टाइप से हो जाता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि अभी से लोग गाली देने लग गए यूएसए को कि यूएसए को अपना ट्रूप्स वहां से उठाना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था. कि जो बिडेन को गाली दे रहा है, अभी मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, सब लोग गाली दे रहे हैं, न्यूज चैनल वाले सब लोग की यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन, ये वो है ना. तो अब क्या होगा, वो सेंटीमेंट डेवलप ज्यादा हो जाएगा. यूएसए का मार्केट अगर हिट करता है तब इंडियन मार्केट ऑब्वियसली इंपैक्ट होगा, क्योंकि यूएसए का मार्केट को देख के ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट इंपैक्ट करता है. अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशनशिप टू इंडियन मार्केट बहुत कम है, क्योंकि अपना बिजनेस लाइन अफगानिस्तान के साथ बहुत कम है, बहुत ही कम है. कुछ पाइपलाइन या कुछ है, अदरवाइज इतना हम लोग का अफगानिस्तान का कोई बिजनेस है नहीं. तो यू कैन स्टे रिस्क फ्री, मतलब ऐसा मेरे को नहीं लगता इम्पैक्ट पड़ेगा. अब लेट्स सी द फ्यूचर. अब अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होता है देन तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? योर आंसर्स आर, योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. हमारा हेलो बोलिए. 3 चीज डिस्कस किया, आरएसआई, इचिमोकू और फिबोनाची. तो ये तीनों में से सबसे प्रेफर्ड कौन सा, मतलब ये तो देखना ही चाहिए. This is dependent on प्रेम, ये बहुत ज्यादा like personalized question हो गया. Like I am much more reliable on RSI and Fibonacci. Like Venki can also show that हमेशा मतलब like even if I select 100 stocks, my 95 stocks will be on Fibonacci and RSI. But हमेशा जरूरी नहीं Fibonacci and RSI have the higher probability which we call as success rates. Because in intraday RSI and Fibonacci का कोई यूज नहीं है. It's much more reliable on swing trades. Like जब वेंकी यूज करते हैं अपने MACD एंड स्टोकास्टिक्स, वो मच रिलायबल है ऑन इंट्राडे. एंड बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स है, लाइक हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. हाउ मच यू कैन एक्सप्लोर, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स. लाइक पीपल आल्सो जस्ट ट्रेड ऑन द EMAs एंड SMAs. सो क्या है कि which you one find very much comfortable with. Like जैसे तुमको अगर अच्छा लगता है कि it's very good for support and resistance के हिसाब से तुम ट्रेड करो, it's good. You are going with volumes and all that, it's good. Volume oscillator is also a good indicator because वो volumes पे ट्रेड करता है and उसका भी probability बहुत कम होता है. So you just take up the things that तुम किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है and how much the मतलब तुम उस पे कितना एफर्ट दे पा रहे हो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को सीखने के लिए. बेसिकली तुमको कौन सा इंडिकेटर सूट कर रहा है वो देखो. एग्जैक्टली. इंडिकेटर्स हंड्रेड्स ऑफ हैं और
आपको कौन सा सूट कर रहा है कि भैया मेरे को ये ज्यादा सूट करता है। बहुत चीज होता है, मैं भी एफएनओ में ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी पूरा ही अलग चलता है, मतलब इवन आप लोग हंसोगे उस टाइप का है। तो अब आपको बस बेसिकली वो मेरे को सूट करता है, तो आपको आप इंडिकेटर सीखो, लर्न, ट्राई टू लर्न मैकडी, आरएसआई, सबका टेक्निकल समझो, सब कुछ समझो, एंड आप अपने देखो कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है और आपका जो इमोशनल एंड सोशल बैलेंस है आपके लाइफ का, आपका खुद का, उसको कौन सा चीज सूट कर रहा है, उस हिसाब से एंड यू शुड टेक द डिसीजन। और उसके बाद तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। स्पेशली ट्रेडिंग में आपको खुद का देखना होगा, इन्वेस्टिंग तो वेदू विल टेक केयर ऑफ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और जैसे कोई क्राइसिस सिचुएशन में तो सारे सपोर्ट लेवल ये सब टूट जाते हैं, तो तब नहीं, तो कुछ उस काम समय नहीं आता। वहाँ पे बेस्ट थिंग फंडामेंटल, इज फॉर फंडामेंटल्स, यस। लाइक वहाँ जस्ट का तो बिकॉज अभी कुछ दिन पहले जो स्मॉल कैप्स गिरा, तो मेरे मैक्सिमम रिप्लाईज, तुम अगर ग्रुप में होगे तो तुम देख रहे होगे कि मेरे मैक्सिमम रिप्लाईज थे कि सेल ऑफ द स्टॉक्स, जस्ट बिकॉज आई एम ए टेक्निकल अराउंड पर्सन। क्योंकि मेरे को इन्वेस्टिंग से, मेरा इन्वेस्टिंग स्टॉक्स एकदम अलग है। एक बार मैंने खरीद लिया तो मैं उसको बेचता नहीं। लाइक बहुत रेयर केस होगा कि आई विल बी एवरेजिंग इट आउट, बट कभी नहीं। आई डोंट टच द इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। मेरे बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं अराउंड 2017-18 के टाइम से, दे आर इन नेगेटिव, बट मैंने उसको कभी टच नहीं किया बिकॉज मैंने, मतलब एक मेरा व्यू था इन्वेस्ट करने का। ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को कभी मिक्स नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल दी मोस्ट दिक्कत सबसे बड़ा यही होता है कि इंसान को लगता है कि बहुत ज्यादा गिर गया एक स्टॉक एंड आई एम एग्जिटिंग दैट स्टॉक बिकॉज अब मेरे को वहां से पैसा नहीं बन रहा। मार्केट में पैसा बनाने के लिए इंसान लोग को 40 साल लग गया है। सो वी जस्ट एक बुल रन है ये। इसको कभी भी वो मत सोचना कि दैट निफ्टी विल बी गोइंग टू 50,000 और बस मजा आ जाएगा। तो ये कभी नहीं हो रहा। हमेशा ट्रेडिंग स्टॉक्स को एकदम अलग पर्सपेक्टिव से देखो एंड इन्वेस्टिंग को एकदम अलग पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिंग को अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर फॉलो करोगे, लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग देन यू मस्ट हैव अ स्टॉप लॉस, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग इज जस्ट अ भैंस के सामने बीन बजाने वाला बात है। Because if a trading stock doesn't have a stop loss, then you will end up in losses. लॉसेज क्यों ना, क्योंकि बिकॉज आपका वहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय ज्यादा रहता है, रिस्क आप ज्यादा लेते हो, एंड अगर आपका एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत, कैपिटल लॉस का परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। Exactly. वो चीज देखो। एंड इन्वेस्टिंग को यू शुड टेक्निकल्स को देखो, टेक्निकल्स को यूज करो टू नो द एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट यू कैन से, लेकिन ज्यादा डिपेंडेंट रहो फंडामेंटल्स में। टेक्निकल कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं है कि टेक्निकल्स विल बी आज अच्छा है। हाँ, आज आपको इंडिकेट बाई का दे रहा है, 15 दिन बाद बोलेगा कि सेल कर दो। हाँ, एग्जैक्टली। बट फंडामेंटल्स ऐसा नहीं Both होता have their own place, but we should take it where we need. Like when market is falling, we should more based on fundamentals. And when हाँ, बिकॉज जब मार्केट फॉल otherwise करते we हैं तो can. टेक्निकल्स में कुछ दिखेंगे नहीं जब तक रिवर्सल नहीं होता। एंड रिवर्सल नहीं फंडामेंटल्स आएगा। विल शो यू दी बेस्ट जेम्स। लाइक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत लो वैल्यू पे अवेलेबल थे और हमने मिस किया, एंड अभी वी आर बाइंग एट वेरी हाई प्राइस बिकॉज वी डजंट हैव एनी ऑप्शन, बिकॉज पी जस्टिफाई कर रहा है उसको, टेक्निकल्स आर गुड एंड मार्केट इज सपोर्टिंग दैट। सो एक स्टॉक है बहुत, जैसे आईआरसीटीसी, जस्ट अ ईयर बिफोर इट वाज अराउंड एट 500 600 700 लेवल्स एंड नाउ इट्स 2700। यस, तो वही होता है। मिल गया समझ। हाँ, एग्जैक्टली। एनी अदर क्वेश्चन? यस, केयूर कुलकर्णी इज टाइपिंग, लेट्स सी। ऐसे आप लोग भी पूछ सकते हैं ऑन वॉइस, कोई इशू नहीं है। First of all, I want to thank all of you for being so much patient. I think you all have passed the patient test in the investing also. सही बात है। वी हैव द क्लास That's long session. 1.5 hours। यस, So as Venkat mentioned earlier कि कोई भी स्टॉक लो तो अगर वो गिरे अच्छा हो, मतलब wait for the right time to enter and then you can buy. If it goes down, you can average it out. Suppose a stock like IEX or Tata Power for that matter, which have good future potential, you have bought it, suppose 10K invest किया एक स्टॉक में, and then अब वो बढ़ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे पास उस टाइम कैपिटल नहीं था, अब है इन्वेस्ट करने के लिए उसमें, तो लाइक अगर वैसे स्टॉक्स मिल जाते हैं कि कभी भी वो स्टॉक्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है एंड इट्स डजंट इट वो कभी डाउन ट्रेंड दिखा नहीं रहा अभी रिसेंट में, तो बेस्ट थिंग इज एसआईपी। लाइक फ्रैगमेंट में एक हफ्ते में ऑन थर्सडे मैक्सिमम, यस, हर थर्सडे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है अपने आप को। बेस्ट थिंग उस समय उठा लिया करो, एंड इनफैक्ट कभी भी जब भी वो हल्का सा रिट्रेस करे, इट्स अ बेस्ट थिंग टू बाय। वैसे स्टॉक्स को कभी इग्नोर नहीं करते। एक्रिसिल मेरा अराउंड 180 पे लिया हुआ था, मैंने उसको एवरेज कर करके भी अराउंड 330 लेवल्स। 600 700 तक का लेवल तक में SIP stock we have suggested last week. 5 stock we have suggested: TCS, Grasim, Kotak Mahindra Bank, and FSL. No, not FSL. FSL is also very good. FSL में भी कोई चाप नहीं है. It's a very good company. But we have suggested 5 stock in the Telegram public channel for stock SIP. So basically, what you can do, you can save every month. You can blindly invest in it. Means there is no risk associated at all. Like it is all like FD more and now. Yes.
कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव रिटर्न दे ही नहीं सकते लॉन्ग रन में। वो सब एग्जांपल दे रहा था प्रतीक, मतलब दे आर लाइक कि बजाज होल्डिंग इज देयर। हाँ So ये वो लॉन्ग सब टर्म ये सब मतलब क्या करते हैं हम लोग, 5 साल 10 साल यूजुअली, या फिर मतलब वो टाइम फ्रेम? वो आपका कॉल है। 1 साल से ऊपर में आप लॉन्ग टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो। अब आप कैसे डिफाइन करो, वो देखो अब कि मेरा बेटा देखेगा कि मैं 5 साल बाद मेरे को शादी करना है, उस समय मेरे को चाहिए कि 10 साल बाद में हो सकता है मेरे मम्मी पापा रिटायर कर It is all उस the समय चाहिए। financial requirement you have. हाँ Ultimately, उसके हिसाब we are से all planning for finance, our Yes. finance for future. बिकॉज तो एफडी के आपका उतने रेट्स अच्छे नहीं है कि उस पर रिलाई किया जाए। If you want to buy a house 10 years down the line, or you want to, हाँ you have some financial हो commitment, सकता है so that would be your point. So you have to plan your timeline. स्टॉक वो एसआईपी चीज रही ना रही, इट्स अ वेरी गुड एडवाइस टू एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छे म्यूचुअल फंड्स के भी पोर्टफोलियो होते हैं, लाइक यू नीड टू एनालाइज देयर बीटा ऑफ द रिस्क, लाइक बीटा इज बेसिकली द रिस्क ऑफ द फंड्स। बीटा को एनालाइज करके व्हेन यू गेट अ गुड पोर्टफोलियो, इट कैन गिव यू अराउंड सीएजीआर ऑफ 17%। लाइक आई एम हैविंग अ पर्सनली a CAGR of 23% in my mutual fund portfolio, because हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। मार्केट बढ़े गिरे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्टेबल रिटर्न्स रहता है। हाँ अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, एक दो फंड मैनेजर है मेरे ग्रुप में है, आपका ये नीलेश सुराना, एंड एक्सिस बैंक ग्रुप में है जिनेश गोपानी। ऐसा और भी फंड मैनेजर, ये दो का मैं देखता हूँ, ये लोग का जो भी फंड के लोग मैनेजर है, वो फंड देखना आपको कांस्टेंट रिटर्न दिया है। तो उन लोग का एलोकेशन और री एलोकेशन इतना स्ट्रांग है कि नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है कोई भी मार्केट में लॉन्ग रन में। 1 साल में आपको कभी भी नेगेटिव मिलेगा नहीं, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, अगर खुद आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। Sir, can you also tell the names once again? You can comment on our Telegram, means in Instagram also at any time. You can. You do one thing, you comment your question, means you ask the question in the Instagram, comment, and we will answer you in there. Yes, because Okay, I'm Instagram has saying the flexibility, and it has like many of us have the ID and password, so it's very good to like कोई भी अपने आप को redress कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे I am repeating the name, Dinesh Gopani from Axis Mutual Fund and Nilesh Surana from Mire Group, Mire Asset Group. मेरा access is great, बहुत अच्छा। Any other question? और कोई questions? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मतलब ये जैसे मनीष ने बोला कि 2 आप ट्रेडिंग अकाउंट रख सकते हो, एक ट्रेडिंग के लिए यू कैन हैव अ डिस्काउंट, सो चार्ज इफ यू हैव 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स और 2 or more, because I have faced it. I had an account in Carby earlier, so and also in ICICI Direct, but I think they charge around 850 a year, ऐसे कुछ एक चार्ज हुआ था मेरे अकाउंट से, बट मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं हो क्यों हुआ था। इवेंचुअली दो ट्रेडिंग अकाउंट्स अगर अपने को पता नहीं चलता कि उसका अकाउंटेबिलिटी हम लोग को मालूम नहीं होता, तो इट्स गुड टू क्लोज द अकाउंट, बिकॉज जैसे मेरे भी अकाउंट्स रहे हैं काफी सारे, बट इवेंचुअली मैंने सारे क्लोज करवा दिए, बिकॉज आई एम करेंटली ऑन जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड आदित्य बिरला, एंड वन इज एक्सिस डायरेक्ट, बिकॉज अपने को थोड़ा बहुत रहता ही काम तो चलता है। सो एक डिस्काउंटिंग ब्रोकर कभी भी उतना ज्यादा फॉल्ट नहीं करता। बेसिकली पहले डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स काफी ज्यादा खराब थे, लाइक पहले के बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वाई टू लाइक खराब करना नाम उनका, बट इवेंचुअली अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, डिस्काउंट ब्रोकर्स इज गुड फॉर ट्रेडिंग, एंड वन अकाउंट इज वेरी मच गुड, बिकॉज एक ही अकाउंट में कितना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। आई हैव पीपल सीइंग दैट दे आर गोइंग विद 50 lakhs ऑफ कैपिटल ऑन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन जीरोधा। सो कभी भी उतना ज्यादा अकाउंट्स रखना, बिकॉज अपने को रिकॉन्सिलिएशन में दिक्कत हो जाता है ना कि कहाँ से फंड कट गया। एक और चीज आप नहीं तो कर सकते हो, सी हैविंग 2 डीमैट का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद के नाम पे 2 रखना होगा। सपोज आपके घर में यू आर यूजिंग दी डीमैट, तो 2 अकाउंट ट्रेडिंग कर लो, इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर लो, दैट आल्सो यू कैन डू, लाइक वो मैं करता हूँ कि डिफरेंट आने के मतलब एक को ट्रेडिंग में यूज करता हूँ और बाकी को इन्वेस्टिंग में यूज करता हूँ, तो यू कैन डू दैट आल्सो। और अदरवाइज जीरो का हाँ बेसिकली, और ये पॉइंट जो मनीष उस समय रखा था उसका रीजन यही था कि आप अगर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक ही डिमांड रखोगे ना, तो आप यू विल गेट कंफ्यूज। मतलब मैंने बहुत 4-5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टिंग के स्टॉक आप सेल करके निकल जाओगे ट्रेडिंग के व्यू से, और ट्रेडिंग के व्यू के स्टॉक को आप लॉस कर रहा है तो उसको रख लोगे, बोलोगे ये मेरा इन्वेस्टिंग है, तो सेग्रीगेशन करना बहुत हो जाता है। इसीलिए अलग अकाउंट है तो बेटर है। यस, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? For charges, you can join Birla. There is a lifetime EMC of 1000, so they do not deduct any other charges. हाँ उसमें कोई चार्जेस भी नहीं है, तो दैट वी विल मॉनिटर आल्सो, मींस हम लोग को अपने जो रेफरल हैं तो हम लोग मॉनिटर कर। हाँ If you ask, we will help. इन्वेस्टिंग के लिए यू कैन कांटेक्ट प्रतीक और टू ऑफिस विल हेल्प यू।
Okay. Any other questions? सपोज अगर किसी को आईपीओ अलॉट हुआ कोई भी कंपनी का सपोज, तो व्हाट शुड बी हिज व्यू, मतलब टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मार्केट। अभी एक्चुअली आईपीओ का इतना ज्यादा मतलब वो है, पीपल अब सोच ही नहीं रहे इन्वेस्टिंग के व्यू से। जस्ट बिफोर द मतलब कोरोना वायरस थिंग, पीपल अगर अप्लाई करते थे ना आईपीओ के लिए, दे यूज्ड टू होल्ड दैट, बिकॉज अगर एक आईपीओ मिलता है तो वो प्राइस पे कभी आईपीओ वापस नहीं जा सकता। बट इवेंचुअली क्या है ना, अभी इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है आईपीओ, पीपल आर जस्ट बाइंग इट फॉर लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है, दे आर सेलिंग इट ऑफ, एंड आईपीओ अपने प्राइस से नीचे आ जा रहा है। जस्ट लुक एट केमकॉन एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जो बहुत अपन सारे, बट अच्छे हाँ, हैं। सो अच्छे इट्स भी अ है बेस्ट थिंग। लेकिन कौन बेहतर सूट, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, तो सबसे अच्छा वही है लिस्टिंग गेन्स लेके अभी, क्योंकि अभी पता नहीं क्या अजीब सा मेंटालिटी आ गया सबका कि दे आर थिंकिंग दैट दे आर मिंटिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, बट ये ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। लाइक एक क्रैश और हो, सब वॉश आउट हो जाएंगे। और एक और चीज इसका उल्टा भी हुआ था, जैसे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का आया था, 1200 कुछ रुपए में आया था, मेरे को याद है। लिस्टिंग वॉज नॉट दैट टू गुड, 1300-1400 था, बट मेरे को विश्वास था कि इट विल गिव अ गुड रिटर्न। नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 3300 और 3400। और भी है, डीमार्ट था, आईआरसीटीसी, और भी बहुत है। तो सी अल्टीमेटली आईपीओ से कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली हम लोग को उसका फंडामेंटल्स देखना और टेक्निकल देखना है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट में आपको इन्वेस्टिंग करना है। हाँ, आईपीओ आपको जैसे मिल गया और आपको लगता है कि उसका फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग नहीं है या कुछ है, और आपको लगता है कि मेरे को इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, देन यू एग्जिट। और आपको अगर लगता है कि नहीं भाई स्ट्रांग है, अभी आपको फॉल दिख भी रहा है, तो अगर आपको बिलीव है कि ये कंपनी परफॉर्म करेगा, देन यू शुड होल्ड इट। बेसिकली जो हम लोग पहले डिस्कस किया है एक देर से, वो आईपीओ के लिए भी एप्लीकेबल है आफ्टर लिस्टिंग। With the same class, we can see IPO, like we are analyzing the company. बेसिकली सेम, बिकॉज वो भी आईपीओ, हर कंपनी आईपीओ के थ्रू ही आया था, उसके बाद सब हो गए, तो वो दैट यू कैन सी, या 50-50% कर लो, हाँ वैसा कर लो। एंड ये भी एक अच्छा चीज है कि कभी भी फुल प्रूफ नहीं रहना चाहिए कि निफ्टी 50 आर दी बेस्ट स्टॉक्स, बिकॉज मेरे पास एक एग्जांपल है, सुजलॉन के मेरे पास फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं व्हिच इज प्राइस्ड एट 450 एंड नाउ सुजलॉन इज एट 3 रुपीस। सुजलॉन एक टाइम था जब निफ्टी 50 का पार्ट था और अच्छा यस अच्छा लेवल में एग्जैक्टली। था। रिलायंस कम्युनिकेशन निफ्टी 50 का सबसे बड़ा कंपनी था आज से 15 साल का, सबसे बड़ा कंपनी। आज को समोसे के भाव बिक रहा है, वो भी बिक रहा है कि नहीं पता नहीं। तो एंड जस्ट सी उसके वैल्यूएशंस अभी भी ऐसे हैं कि पीपल उसमें भी फॉर्च्यून्स बना रहे हैं, लाइक दे आर पुटिंग मनी एट 2 रुपीस एंड दे आर टेकिंग आउट एट 6 रुपीस। तो अभी हाँ, कोई मतलब वो नहीं सब रहेगा। Even हाँ even now, people are asking, should we invest in idea? So हाँ, means आइडिया भी निफ्टी 50 का स्टॉक है, यस। वही, तो वैसे कभी नहीं we should look at the business first, पोर्टफोलियो का not रिव्यू the करना इज share. अ वेरी गुड थिंग। एवरी 3 मंथ्स में हर क्वार्टर के बाद हाँ, अपने यस, पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स के क्वार्टर रिजल्ट्स निकालिए एंड जस्ट रिव्यू योर पोर्टफोलियो कि कौन से कंपनीज मेरे को अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, कौन से खराब। हाँ, जस्ट एक एक्सेल में एक फाइल बनाइए और जहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस लिखिए, यू विल गेट द हाँ, थिंग डेट दैट। वाइज मेंटेन। हाँ एग्जैक्टली, हर क्वार्टर के हिसाब से इफ यू सी कंसेक्यूटिव माइनस माइनस माइनस, बस समझिए कि वो स्टॉक खराब है। अब कोई कुछ भी बोले मतलब नहीं, मेरे को हटाना है इसको, बिकॉज परफॉर्म नहीं कर रहा, टेक्निकल्स कितना दिन तक सपोर्ट करेगा, दैट्स इट। अब और आइडिया पोर्टफोलियो आप, रिव्यू के लिए भी है, अगर वैसा है तो अपना पोर्टफोलियो अपने वेडू नंबर में भेज सकते हैं, कोई भी हो जाता है वो, हम लोग कर देते हैं उसका एनालाइज। हाँ, वो भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। एंड आइडिया का जैसे बहुत लोग पूछते हैं, अब खुद जब आपका ये कुमार मंगलम बिरला खुद क्विट करने के लिए रेडी बैठा है, उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देखो आप अननेसेसरी ज्यादा रिस्क ले रहे हो, या ऑपरेटर को अपना पैसा खेलने के लिए दे रहे हो। जैसे फ्यूचर ग्रुप में पता है 100 प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें, लेकिन उसके बाद भी लोग उसमें खेल रहे थे। तो फर्स्ट थिंग है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। मीन कि हम लोग सोचते हैं कि 5 रुपए में खरीद ले, 10 में बेच के निकल जाएंगे, वो चीज देखो हर बार नहीं हो पाएगा, वो 5 का जीरो भी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। Then Any other that investor is the same which Venki has explained. question? Coming with a 2 lakh and imagining of the 4 lakh, हाँ, and after हाँ, taking out 1 lakh. हाँ, उसका देन ये दे आर फ्लैगिंग स्टॉक मार्केट की भाई बहुत खराब स्टॉक जगह है, मार्केट जुआ जुआ है, हाँ जुआ है, ये बहुत कॉमन टर्म है ये। जुआ। And there is a saying in the stock market that, so I mean, it's a hidden fact. Everybody knows this, that, only 1% of the entire stock market people will make profits. Remaining 99% people make losses. Yeah, so it is a hidden fact. Everybody thinks that, This is about trading. This is about trading. For एक्चुअली investing, ये investing is a different thing. दिस इज इन्वेस्टिंग में भी बेसिकली क्या होता है बिकॉज ना, ऑफ हम बहुत दिन पहले एक पोर्टफोलियो एक शेयर दिए थे, 7 NR एंड ऑल ये सब का एक पोर्टफोलियो मैंने भेजा था। वन थिंग सम लाइक कोई एक फ्यूचर मतलब वो था, फॉर्चून इन्वेस्टर था, अराउंड 90 लाख के आसपास उसने इन्वेस्ट किया था, 90 लाख समथिंग 1 करोड़ आई थिंक। एंड उसका पोर्टफोलियो गिर के आ चुका था अराउंड 2 लाख और 3 लाख समथिंग, कुछ वैसा आ चुका था। मैंने स्क्रीनशॉट around शेयर 7 किया था। lakh, 7 lakh. एग्जैक्टली 7 लाख एंड अब सेम नाउ स्टॉक्स था, मेरी एक दीदी है उनके अकाउंट में। सो आई वाज जस्ट, हम उनसे पूछ रहे थे कि ये कैसे, तो वो बोली कि ये एक टिप मिला था मेरे को। सो ये टिपस्टर्स होते हैं ना, ये सबसे बड़े स्कैमस्टर्स होते हैं। लाइक दे सब ऑपरेटर्स हैं ये लोग। इनको कोई मतलब नहीं, इनका पैसा लगता ही नहीं है, दे आर जस्ट अर्निंग द कमीशन, जितना प्राइस बढ़ा दे आर अर्निंग द कमीशन।
इनको कोई मतलब नहीं है उससे कि कितना कितना आदमी का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड जस्ट इमेजिन दैट जिसका मनीष बात कर रहा है, सपोज को उसका 70 लाख का इन्वेस्टेड है एंड उसका सपोज को 1.5-2 करोड़ का टोटल पोर्टफोलियो था, उसको उसमें से बेचने 50% की खत्म। आई विल शेयर द चैट, आई विल शेयर द चैट, वेट आई विल शेयर द चैट। ये इतना इंटरेस्टिंग चीज था कि मतलब 7 NR जस्ट सी दिस 7 NR रिटेल, ये रहा 7 NR का ग्राफ। अब इसमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो का जस्ट सी 30-40-50% ये बेचो, रहा, लगा यहाँ दोगे, से इंसान गया और ये Yes. वॉल्यूम ही नहीं है। 2020 से लेके अभी तक ये वॉल्यूम ही नहीं है, पूरा कोलैप्स है। आदमी बेचेगा कहाँ? लाइक स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 243 एंड नाउ इट्स एट 8 रुपीज। 240-50 में जो फंसा है और जो अपना पोर्टफोलियो का 30-40% अगर लगा दिया है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कहाँ मिलेगा बताओ। एग्जैक्टली वही। ये सब चीज का ध्यान रखना होगा, एंड इफ यू नीड हेल्प देन 2way2 इज देयर। हाँ। And one more thing, guys, this is just a disclaimer. All we are saying here is for only education purposes. We are not directly or indirectly giving any tips or advices. Yes, We're yes. not giving any of that sort. This is just for your It's just for education. educational purposes. Yeah. And also, we are not earning registered नहीं है, anywhere. सब कुछ है, earning नहीं है। Correct. Even This we is purely for are not education. in, even we are Since not we are purchasing any very stock. much interested and enthusiastic in finance, so We that's are why we are little sharing our knowledge. Yeah, we are We little are looking excited about. forward to अपने बहुत जल्दी ही एक लीगल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। इट्स नो इशू। बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, मल्टीफोल्ड्स अपने को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट प्रोवेडो। इसका कोई वो नहीं है, लाइक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइक मतलब लाइक हम गायब हो गए या प्रतीक भैया कभी गायब हो गए या एनी ऑफ आवर द प्रोवेडो टीम कभी कोई गायब हो गया, वैसा कुछ नहीं होने वाला। एवरीवन विल बी देयर एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी देयर। इवन हम लोग का जितना भी एडवाइजरी है, जो भी है, ऐसा है कि अगर गायब भी हो गए तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ये Because चीज आप first देखो। thing we see is fundamental. हाँ। And also kind of stocks that we are giving in the Telegram or WhatsApp. Now those are those stocks where we are investing. We are telling that we are investing. If you आज want to स्टॉक में invest, just अभी भी कोई ना invest. कोई टीम का इन्वेस्टेड मिलेगा ही मिलेगा। नो Yeah, डाउट्स yeah. कि कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग मैंने बस बोल दिया एंड एवरीवन। एसटी मीडिया मैंने भी लिया था, प्रतीक भैया भी लिया था, दो वी आर इन लॉसेस बट स्टिल वी आर होल्डिंग इन वेरी फ्यू अमाउंट्स। सो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम लोग अफेक्ट करे वो चीज। It is less than 5%, so it is not at all affecting. Yeah, and this is not a direct advice, and this is not like the moment we say something, you need to invest. It's totally your this thing, your risk, your money. So nobody is compelling you to do this. So if you want to Even invest, just you invest. only see we are suggested I think more than 100 stock, 150-200 stock, लेकिन हम लोग खुद आपको बोल रहे हैं पोर्टफोलियो बनाओ 20-30 स्टॉक्स का। एग्जैक्टली। तो उसी किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने आपको ऑप्शंस दे दिया, गुड ऑप्शंस दे दिया, उसमें आप खुद का एनालाइज कर लो, करना है तो, एंड उसका उसमें बेस्ट आपके साथ जो पिक आपको लगता है कि ये मेरे बेस्ट पिक्स हो सकते हैं, वो उठाओ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? You can keep rolling it also, like trading stocks, like swing trade. Actually, we are sharing the swing trade, so you can keep it rolling. That also can be done. ओके, और कोई क्वेश्चंस? तो अब मेरे नेक्स्ट पास- सेशन कब होगा? People can share feedback. ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, नेक्स्ट सेशन कब होगा? ये अभी responses देगा। एग्जैक्टली, अगर अपने को जितना दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर, एग्जैक्टली। Yeah. लाइक आज हम लोग famous अराउंड करो। 16-17 जन थे एंड प्रीटी गुड, बहुत अच्छा चैट रहा ये 1-1.5 घंटे का। हम लोग इसे लंबा भी ले सकते हैं, नो मैटर, बट हम लोग को पीपल का एंगेजमेंट चाहिए बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग आवर ओन पर्सनल लाइफ हियर बिकॉज जस्ट फॉर यू। अब आप लोग से ही हम लोग को अगर वो एंथुसियाज्म नहीं मिलेगा देन जस्ट सी, हम लोग का भी मोटिवेशन का एक अपना लेवल है। सो आप लोग एफर्ट लगाइए, हम लोग का प्रोवाइड ग्रो करें, हम लोग हमेशा दिखेंगे लाइक एनी टाइम। People are consistent with the 2 hours time, so we are feeling proud. Like yes, we are making Exactly. some means we are changing. आप लोग जस्ट एज फॉर सेक ऑफ नॉलेज कि हम लोग के पास प्रोवेडो से एसोसिएटेड सिर्फ इंडियन पीपल्स नहीं है, हम लोग के पास कुछ मैसेजेस आए हैं जो अब्रॉड से इंडियन मार्केट्स पे ट्रेड कर रहे हैं ऑन ए ट्रस्ट ऑफ प्रोवेडो। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है कि वी आर ग्रोइंग एंड वी हैव, मतलब लाइक हम लोग सोच रहे हैं कि और वैसे अपने पास लोग आए जो अपने साथ लर्न करें, ग्रो करें, अपने But we can benefit you also. यस बेसिकली देखो, यू ऑल हैव अटेंडेड आवर सेशन। आज हम लोग का चलो 15-20 जन का अटेंडेंस था। अगर आपको अच्छा लगा, आप 10 आदमी को बोलोगे और अगर पीपल का एंगेजमेंट बढ़ेगा, सब कुछ होगा, देन वी विल वेरी फ्रीक्वेंटली स्टार्ट टेकिंग सेशंस। इवन आप अपने क्वेश्चंस को आप लोग रेडी कर सकते हो कि क्वेश्चंस डाल सकते हो। वी विल देन प्रिपेयर अ क्वेश्चन चार्ट एंड हम लोग का सारा डिस्कशन Q&A बेसिस में ही होगा, जैसा आज हुआ। उसमें क्या होता है, वो इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। तो हम लोग आपके क्वेश्चंस को लेके एक डॉटेड पॉइंट बेसिस में क्वेश्चंस बनाएंगे, देन वी विल एड्रेस ऑल द क्वेरीज।
तो जितना जल्दी जितना जैसा रिक्वायरमेंट होगा और जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम लोग डिपेंड करेगा, और हम लोग वैसे ट्राई करेंगे जल्दी फ्रीक्वेंट बेसिस में स्टार्ट कर दे क्लासेस लेना, लेकिन द पॉइंट इज कितना एंगेजमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है। अब आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, देन वी विल ऑलवेज टेक इट, नो इश्यू। एंड 1-to-1 तो हम लोग लेते ही हैं, कोई एड्रेस करते ही हैं। एग्जैक्टली, आपने 1-to-1 के लिए तो हर जगह प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम हाँ, के हाँ, चैट, हाँ। अपना प्रोवाइडो का बॉट एंड हाँ। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स, तो सब में हम लोग 1-to-1 में एक्टिव, नहीं कोई आप ऐसे मिल, WhatsApp. हाँ। ओके, क्वेश्चन। ओके, और कोई क्वेरीज हैं क्या? लाइक अगर नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटा का हो गया, इतना सोचा ही नहीं Thank हम you लोग ने। everyone for being constant and being in the last. Yes. We'll see you in the next one. इवन सीरियसली सेइंग, इतना हम लोग खुद नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा, लेकिन आप लोग थे तो इसलिए। And people remain engaged as well. हाँ, yes. Those who are- अब आप लोग, हम लोग ने जो बताया था उसके बेसिस आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ करो, बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड, यू आर एंगेज्ड, दिस शोज दैट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बाय। Thank you guys.